Hello friends, welcome to Unacademy, which is the largest online education platform for GATE Computer Science and Information Technology. Myself Malisham Devasane. In this session, I am going to take the session on compiler design, which will help you to revise the concepts of compiler design, because I'm going to solve the problems which were asked in the previous year GATE questions from year 2022. As many as possible, guys. Okay, this session is really going to be important to understand the concepts, how the questions were asked in the previous year GATE, including the code optimization previous year GATE questions. Remember that. All right. Yeah, iceberg. Good evening. Yeah, good evening everyone, guys. Okay, before starting the session, as usual, let me tell you what I am doing on this platform. And I'm working as an educator on Unacademy in our GATE and ESE segment, where I work in CSE and IT branch. Okay, this is my referral code DEVALIVE, which will help you to get the subscription to also access all the free classes on Unacademy. Right? You can choose this code for any purpose, either for free classes or plus or iconic. Then if you want to find my classes, you can visit this URL unacademy.com/DevaGateCSE, where you can find all my classes on Unacademy. So if anybody want to know about me, yeah, you can read this information that I've worked in various institutes and I've completed MTech from IIT Bombay, and these are all facts that you can find out. You can search on Google, you will know about me. There's absolutely right information that I'm providing to you. And what I'm talking about, I have taken already popular courses on Unacademy, where CTOC compiler are the most interesting subjects on my classes. All right. And if anybody is here, hi everyone, and if you are watching this video, please like this session. That makes us, I know you are present in the class. I came here to just like your session as well. So much, so thankful as well. Satyajit, good evening, and Piyush, good evening, and Abhishek, good evening, and Vesha, good evening. Yeah, good evening everyone, guys. Yeah, don't forget to like this session, and remember this code DEVALIVE is my referral code, and you can come to Unacademy with this referral code, or you can refer to your friends to access Unacademy classes. Okay, these are various classes that I have taken free on Unacademy, guys. You can access these classes, and also we have a proper plan for the coming few days and to attend my classes too. And recently, we have started the batches like doubt clearing batch and aspire GATE batch for 2021, and 2022 is going to start soon, guys. Rank booster batch for 2021. All these are happening for 2021, and soon in 2022 is also going to start. And anybody not aware of the Unacademy learning app, this is for the students who want to learn from Unacademy, guys. Please install using the mobile Play Store. You can go to the Play Store, Android Play Store, or even you can choose Apple also. And this is the app named Unacademy Learning App. So install, and if you are preparing UPSC, SSC, SSC exams and IITG, so many exams, you can NET, including AFCAR and so many, and many platforms including GATE and ESE. You have so many categories, and you have more than 40,000 top educators, and so many are available on Unacademy. So you can access absolutely free most of them, and some of them you want to learn systematically, you need to go for plus and iconic subscription. Yeah, guys. Yeah, Bharatendu, good evening. Mega, good evening. Ravi Gupta, good evening. And Whispers, good evening. Yeah, Piyush, all right. Seema, good evening. Thank you so much for joining session today. Great. Don't forget to like the session, guys. Okay, this is our goal. You can choose, if you are going to visit website, choose this goal. Before that, log in using DEVALIVE referral code. And if you want to take the subscription, click on it, so that if you want to search, you can search the videos of our classes, or you can search an educator you can access. And go to the subscription if you are interested, and you have plus and iconic. If you choose the plus, you will have a different plans. Iconic, you will have a different plans. And the best benefits of plus are also there in iconic
And additionally, Iconic will have the separate coach and one-to-one interaction with educators and study plans, separate material, and many more guys. And if you are not aware of the plus subscription plans, 1 year, 1.5, 2 years, you can see 27, 225, 34, 650 and 39, 600 for these three kinds of plans. And for Iconic, 1-2 years you have a plan 4,500 and 54,000 after applying referral code DEVALIVE. Okay, if you want to know about the educators in Unacademy, we have so many educators including me, and all these educators are going to take the classes for you on Unacademy. And if you are taking the plus or icon subscription, you can attend any course from any educator, and that is with one subscription guys. So you can use the referral code DEVALIVE and you are eligible to access any class on Unacademy, right? And these are the benefits of taking the subscription: structured courses, multiple courses for the same subject, study as per your interest and plan, and so many are there. And tomorrow, if anybody want to attend my classes, 8 a.m. I'm taking the algorithm on Unacademy. Remember that. On YouTube, we have other well-experienced educator Ankush sir. And 9 a.m. and what is the best career option after BTech BE. So we are going to have the discussion again tomorrow. You can come to this session, you can ask your doubts and what are you facing right now. And 11 a.m. to 7 p.m. on Unacademy. This is on YouTube at 9 a.m. but at 11 a.m. Unacademy. This is 8 hours complete course guys. And anybody not studied TOC yet and you are in the middle of the TOC, you can attend this session and we are going to complete at any cost within 8 hours the whole course. Then it's going to be the pinpoint, and mostly I may not take the doubts because for the doubts I will conduct separate session, but those people who are ready for the completion in 8 hours, and we are going to start tomorrow on Unacademy. Please join Unacademy. If you don't know about Unacademy, visit unacademy.com and use the referral code DEVALIVE and access to my class. Go to my profile and then access to the classes. Anyhow, I'm going to share on our group, our Telegram channel also. Remember, 8 p.m. we have 100 important questions on C programming part 2. Already 50 questions completed. So tomorrow we will see again 50 questions. Okay, so let's begin without wasting our time. Yeah, Sweta, good evening. Yeah, here we have answers. So don't worry about the answer. Remember that. Anyhow, we have an answer. We need to focus on understanding the problems, understanding the data given to you. And symbol table is accessed only during lexical analysis syntax. Is that wrong? The reason is other phases also can be accessed. Here only word is there. If only word is not there, yes, it is a true. That word is enough to happen either true or false. Remember guys, if only word is there, false. If only is not there, it is true, because symbol table is accessed during lexical analysis, but only is wrong because other phases also can access. And compilers for programming languages that support recursion necessarily need heap. No, they need stack, remember. So this is also false. When will be true? If that word is replaced with the stack, then it is true. This word is enough whether it is true or false. That heap, if I write as the stack, this statement is going to be true, and otherwise this heap is there, so it has become false, because heap supports dynamic memory allocation, not the recursion. Yes or no? Yes, everybody. Heap supports dynamic memory allocation and deallocation, so user can explicitly manage the data at runtime. Yes. Yeah, good evening, Gulu. Errors violating the condition any variable must be declared before its use are detected during syntax analysis. Guys, this is a word here. Look at the words which are going to make this statement. Here only word is there, here heap is there, here syntax. Actually that is semantic analysis. So this is also false. All the three statements are false, guys. Okay, this is the recent gate question in compiler design. And this word, if I make delete, it will become true. This word I make stack, this become true. This word I make semantic, then this become true. I'm also telling you under which conditions, which circumstances these statements are going to be true. Everybody clear this point?
आंसर के लिए कभी चेक नहीं करना गाइस, आंसर तो वैसे ही दिख रहा है सबको दुनिया में, राइट। कॉन्सेप्ट को समझना है, ये क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, अगर फॉल्स है ट्रू कब होगा, ये अगर अंतर समझ में आया ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं कर सकता एग्जाम के अंदर। ऑलराइट, दैट्स अ गुड पॉइंट। सेकंड वन, कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर। तो ग्रामर तो है नंबर ऑफ रिडक्शन स्टेप्स, दिस इज द न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो आपको ऑप्शंस नहीं है तो आंसर 5 6 7 8 कुछ ना कुछ आएगा, वो एंटर करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ रिडक्शन स्टेप्स? is nothing but the number of steps simply using bottom up parser. It's like reverse of RMD. How many steps, how many reduction steps you take? I'm writing the answer guys. Number of reduction steps in bottom up parser is same as the number of steps in rightmost derivation. That's not the steps, but the number of steps. If you do the reverse, you will get the reductions only. Everybody guys? Okay, please, when you ask the question, that is the reason. Guys, please explain to the person that is a variable must be declared before its use are detected during syntax analysis. How do you know that? Int x is there and x is equal y. If I am going to miss this one, how the compiler syntax analysis knows that x and y declared is missing? This is the syntactically valid. No syntax error, but only semantic analysis can identify, okay, x is declared or not, y is declared or not. Any variable must be declared before its use is only detected during semantic because there is a connection between the two statements with the help of a context sensitive problem. Are you clear? That is the W somewhere and W other place. This W is the declaration and this W is the use. And this kind of language comes under context sensitive. Context sensitive, remember. The syntax is individually syntax. This is syntactically valid. Syntax only talks about the structure, not about the type or meaning of this sentence. Remember that. Meaning it can't verify. The types are going to be understood by the semantic analysis. How do I know x is not declared? Because I'm going to look at the symbol table whether x type is there or not. So I'm trying to check the types, but I can't do that because there is no type in symbol table because semantic analysis understands. Syntax means only structure. Semantic knows whether I'm checking about the type of any variable or not. How semantic analysis can detect this error guys? How semantic analysis can detect x is equal y? The semantic analysis comes here. What is the type? It is going to look at in the symbol table. What is the type? If no type means it is not declared. Very simple. It is not defined. अगर symbol table के अंदर x है और y है, lexical analysis does if there is no type, because there is a type column. Here also no type, let's say. That means x, y are not defined in the program. Not declared, you can say that. Not declared in C program. But who does that? The semantic analysis knows this, not a syntax. Syntax only looks at, okay, is this structure valid or not? Yes, structure is valid, but not a semantic. Alright, but compiler error, no doubt. Fine. Now, compiler can detect. Now, reduction steps. Reduction steps, nothing but number of reduced steps during reverse of RMD. It is also called as number of reduced actions you take. Number of reduced actions in reverse of RMD. That is a part of parsing. That's exactly same as number of steps in RMD. So which one will be easy in the exam? RMD or reverse of RMD? In the exam, please, in the exam, yes, Vaibhav, compiler design in which course it is? Yeah, at 4:30 is the finished. Remember that. And that practice is going to. I started today, and this practice is going on till next 2 weekends. Remember, those people who are following me, and in the previous session I have compiled, I have completed old compiler design from 4:30 to 5:30 every day session. Now onwards we are going to practice. Whoever attended, definitely attend
and we have already completed the syllabus. Please attend. Now please tell me, you have triple A, D, triple B. Tell me guys, how many steps you take in RMD? I'm starting here guys. Okay, I will start from here. S, I'm doing RMD, remember, ASB. The B, what I do? I will substitute with small b. And then now S we have 1A, 1B is over. Look at that. Then S has to do remaining job. And S, again I substitute A, S, capital B. And what I do now? Always look at, we are focusing on our rightmost non-terminal, remember. And then we substitute the capital B with small b. Capital B with small b. So you will have this one. And we got 1A, 1B. Now one more A, one more B required. So again we will substitute this S with double A, double B already there. S we substitute with A, S, capital B. Now again we apply rightmost derivation. So what do you get? You get here triple A, S, triple B. Now AB is over. Now D has to be done. That S has to be substituted with D now. The final step is your answer, that is triple A, D, triple B. Now how many substitutions you have taken? Count the number of substitution guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 substitutions. It's nothing but indirectly 7 steps. You can calculate number of edges. So 7 steps we have taken. Also called as, you can say, 7 substitutions. But looks like here 8 steps guys. No need to take the initial one. Are you clear? 7 substitutions we have if you want it. 7 substitutions. Okay, the number of derivative steps minus 1. Basically it's the number of derivative steps only. So we don't count that what we take either end, either last or the first one, doesn't matter. 7 steps or 7 substitutions. It's the same as the 7 reduction steps. Okay, that's the answer guys in the exam. Okay, now we'll move to the next question. Any doubt you can post. I will take care of that. Now we have 2 productions. One is A derives PQ, another one A derives XY. Each of the 5 non-terminals A, P, X, Y has 2 attributes. Remember that. S is one attribute, I is another attribute. Attribute talks about the concept of the SDDs guys. Remember, if you remember the attribute grammars. And S is synthesized, I is inherited. Is talking about, consider the following rules. Now he is not asking about attributes, he is asking about attributed grammar, remember. So let's talk about rule 1. Rule 1, we are applying to the first production, remember. Rule 1, because there you have APQ. And what is the meaning of this one? I will write somewhere here guys. First one, P dot I is equal to A dot I plus 2. And P is computed by depending on A, means the P is computed by depending on parent. Okay, this looks like inherited concept. Yes, no problem. Inherited. Next one, Q dot I is equal to P dot I plus A dot I. Q is computed by depending on left sibling. This is the left sibling and this is the parent of Q. So no problem, we can depend on left sibling, we can depend on parent, still it is inherited. Right? This concept can be used in L attributed grammar. Remember that. Slowly we are going to focus on type of grammar. And next one, this is also over. A dot S is equal to P dot S plus Q dot S. And that A is computed by depending on its child. P, another child, Q. So this is synthesized. So let me write something here to have a clarity what I am actually doing here. Here and here. You depend on parent or you depend on left sibling. And here you depend on children. When you look at this rule 1, it's
it's going to be used only in L attributed grammar, guys. That rule 1 is going to be in the L attributed because I can use a child, I can use a parent, or I can use a lift sibling. So this rule 1, I can say it can present in L attributed. Why not in S attributed? Here they are not talking about S attributed, so don't think about, guys. No need to worry. It is in L attributed, no doubt. Now second one, I'm deleting whatever I have done so far because second point I'm going to take here. Second point, that second rule, x dot I, you are computing based on a dot I plus y. Dot s doesn't matter, SRI, guys. Here you are computing x by depending on parent, by depending on x key, right sibling. Guys, L attributed grammar never uses the right sibling while computing at any node. So right sibling of x, this is a parent of x because you are computing at x, and that's impossible. So you stop it, say directly it is not going to be in L attributed. No need to check other concept, guys. So rule 1 is L attributed and rule 2 is not L attributed. That option is just B. Rule 1 is only L attributed. Everybody, the concept is very simple. Kuch nahi karna. Just you should know the definition of what is L attributed. Just you should know what is L attributed. Okay, clear this point? Okay, next one. Which one of the following kinds of derivation is used in LR parser? Guys, 2019 question. LR parser is bottom up parser, right? Even you can call SR parser, and LR parsers uses rightmost in reverse, rightmost derivation in reverse. Clear? Such questions are very easy in the exam. Please don't ignore this subject, and most of the questions can be done without using pen and paper. Yeah. Next, here look at that. Looks, symbols. Guys, I will tell you one thing. When you look at the symbols, our mind is not going to think forward because symbols have no meaning. Remember that in the world. Symbols we need to understand. We need to start from there. Now we have the symbols here. Now we need to focus on what they were asking. Let I0 is closure of S dash derives dot S. Guys, if this is your grammar and S dash derives dot S closure, and closure sabko pata hai na, how do you compute? S is there, so we are going to write all S productions. Dot we will keep in the beginning, and that's all the initial state. L nahi aayega. Q dot is just there before less than symbol. It is not before just L. Remember that. So L ka production nahi aayega in initial state. Now what is trying to ask? The number of items in go to I0 comma less than symbol. This is I0 mentioned. If I read less than symbol, how many items are present in the next state? So we are going to do that. How? S derives less than dot L greater than. Guys, don't do anything now. What you do? Look at, is there any other item which is having less than symbol just after the dot in the I dot? No, right? If you have, bring it now. Now I brought all of them who are having the less than just after the dot. Now you need to apply the closure. When you apply the closure on L, you will have all the L productions. L dot L comma S. Look at your productions. L derives dot S. Now do not stop because here L is there. So no problem, because already you will get to say you have already taken 2 items. Now again you need to take, but no need to take. And S is there, guys. S productions are not there, so we have to keep every S item here. As S derives L and S derives ID, and we should not stop unless you see the terminal. Yes, we have a terminal, so no problem. And this is going to be the go to of, this is the go to of I naught comma less than is nothing but the set of the 5 items. So the number of items they asked, we have 5 items inside. Clear this point? So answer should be 5. Yeah, कुछ जरूरत है?
We no need to look at entire grammar, we no need to look at how many states are there, just look at what do you want to do, right? I0 they assumed as the closure of S dash derives dot S, then start from there. You got I0, from that you need to read just less than symbol. Clear this point? How many items are there? 1, 2, 3, 4, 5 items. Okay, next. 2019. Look at the question is, they have given a grammar. Again, if any printing mistake, please correct later on. Guys, I'll try to avoid that mistakes. And we have something here. And they are talking about which one? Follow and follow set, right? Compute the follow set of non-terminals B and write the index values for the symbols in the follow set. Okay, so how do you do that? How do you do that? First follow set तो compute करना ही पड़ेगा. Yeah, index table तो दिया. This is the terminal and this is your index. Values for the symbols in the follow set in the descending order. तो ये descending order कुछ लोग को आता नहीं है तो वो लोग बताया भी. It is a decreasing order. Is it clear? It is decreasing order, remember guys. Okay, now focus on what is the follow of B. That takes much time because follow of B requires a practice to understand. If you want to compute follow of B, you need to look at all the B in the RHS side. You need to look at all the capital B in the RHS side. So when I look at this one, who is after B? D is there. But what D is giving, first of D you need to calculate. So you get a small d. How did you get that? Because the first of d I used it. But सब कुछ नहीं लेना है, इसमें एप्सिलॉन भी है, उसको हटा दो, माइनस एप्सिलॉन हटा दो. Then capital B also depends on capital A, union follow of A. This is how you compute follow of B, guys. It takes much time in the exam because follow of B you need to look at so many symbols at a time. And so I got B, I may depend on D, I may depend on D. D to आगे small d and capital A you have not done it. Union I am going to do follow of A. Then what is the follow of A? First do that. First do that. FO of A means follow of A. Now forget about everything. Now focus on follow of A. How many follow of A? A is there. Only small a comes, guys. Small a. And when you write this substitute here, then follow of B is nothing but D comma A. And tell me what is the D index? D index is 1, A index is 3. Now they want to write in decreasing order. So what is the decreasing order for them? 3 comma 1 is descending order. Right. Everybody, 3 1 3 1. Where is the dollar? Dollar never comes now. Come on. Follow of capital A, dollar never comes. Follow of S, dollar comes here. Everybody, compute the follow set and every term, every symbol inside the follow, assign the index, and that index we want in decreasing order. Everybody clear? बहुत easy है. Follow भी आंसर आया तो इंडेक्स सीक्वेंस भी आएगी आपको. सिर्फ मैप करना. ओके, डी आया तो डी आया और ए आया, इसकी इंडेक्स ले लेना, काम खत्म. यस, गुड पॉइंट. नेक्स्ट, another question in 2019, but this is slightly different than what you learned basically. Here you need to understand how a variable can be declared, because this is about declaration, guys. Declaration, right? So, and this is a standard question in compiler too. Most of the time, have you seen declaration and its use came n number of times in the exam so far, and that is the reason you should understand. Okay, suppose I want to write, look at that, I want to declare int x comma y, and here the semantic rules are defined. Structure is already there, production rules already there, and semantic also there. And syntax, you look at, D is there, that D gives TL,
and semicolon is not much important because already we understood it is a single statement. Okay, just ignore the semicolon if you don't have in the syntax, that's okay. And T is going to be type, yes or no? So int we get, and L has to derive now x comma y. L has to derive x comma y, guys. So L has to derive x comma y, and L, what do you have? L1 comma id. You can take that now. L1 comma id. Space is not important because we have sequence of tokens. Now this L1, 8 to aa gaya, 1 is came, y is came. Now x we have to work. L1, that you have to prove id. So this one, int id comma id. So we reached our syntax, and इसका meaning is translation scheme में है, guys. Clear? This is what we have here. If I want to write a statement int x comma y, and you need this grammar, and this grammar also has a semantic because it's defined with semantic action in semantic analysis. Syntax analysis, just you do derivation. You need to construct the pass tree, that's all. Now we did that. Now उसका meaning कैसे assign करे, guys? है ना? So the first statement, look at, guys, I'm trying to design a tree for you to understand. D, and there is a T, there is L, and D has int, T has int, that's it. L as L1, L only, L is L only, and comma, and ID, and L is again ID. You can just write a comma, but understood? When you have more than one L, you need to have a subscription. Now how to understand this problem? Everything is given, only you need to focus on what should be assigned to other variables. Now look at, if you are following, everybody knows the L attributed grammar evaluation concept. You have to do it just looks like in order concept. This is L attributed evaluation, guys. You go down, that is top to down and bottom up. Two concepts are hiding inside. Two concepts. Now you have the semantic actions. Now when you are going up, first which one is calculated? The int is already there with you. It's already there with you, and that int we will send to the T. So what we do here, T dot type, we get, guys, T dot type we get here. Where is that? Int already there here. Yes or no? And so we get to assign here equal to int. How do I write? I'm writing here equal to int, because can you see that? Can you see that int is we are sending to its root, that is a T. That's a T. Why do I do that? Because I have a technique. What technique I have? Then int I will send to this ID, and its type I will send to this one, and I am going to make the entry for ID1 and ID2. And x का type चाहिए int, and y का type चाहिए x help करेगा, guys. So we are sending somehow like this. Let's try. Is this correct method or not? Now that's okay, already given, we are following it. Next we need to go down. When you are going down, now look at D to TL, this one, and T का तो पता चला और L का तो पता नहीं, guys. क्यों? This int we need to send to this one as well as somehow this one. But how do we send? We will decide. How do we send? Yes. Array T has a float also. I am taking an example to understand, Baba. Everybody, Sweta, who is that asking? Bharatendu. I am taking an example to understand how this system works in semantic analysis. Which value is assigned to what variable? Attribute values, how they are assigned to the variables. Remember that. Everybody clear? I'm just trying to help you. Is that T dot type going to other one, down or up? I'm trying to help you. एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, आगे पता नहीं कितने बार आएगा एग्जाम्स के अंदर, भले बहुत कम स्लाइड से इसको एक्सप्लेन करने. Alright, I'm trying to explain. There is something inside this problem. You know that I never explain an answer. I will explain an approach so that you will never lack the concept if you can understand my approach, right? So be careful. I'm trying to help you how the system is working on here. Okay, now guys, I have an int that I send to the T. Now
the t as an int, the t has an int, the t is as an int, yes or no? The t has to send to the L somehow, so that is the reason here the t dot type we will get to the L dot type. That means this L we will compute from the t. That is what I am trying to help you here. Is that t computed from L or L computed from t? That I am trying to help you to understand. Is that clear? L attribute value computed by depending on its left sibling. So यहाँ पर x1 आपको L होना चाहिए, x2 t होना ही चाहिए. क्यों? We know about t, we don't know about L because we are moving from left to right. Are you clear this point? x1 L होना ही चाहिए और x2 t होना ही चाहिए. तो you can left with only A and C option. You can delete B, you can delete D. Are you clear this point? अब तो complete नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा हुआ. All right. Next what we do? अब तो आया थोड़ा L dot type, इसमें भी कुछ आया int. Everybody int आया L dot type. अब क्या करें, मैं देखना है, नीचे जा रहा हूं guys, नीचे जा रहा हूं. L derives L comma id, ये what it tries, x4 dot type is assigned to x3 dot type. अब बताओ रूट में है और टाइप चाइल्ड में है, L के अंदर है, ऊपर है और उसको नीचे पहुंचाना है. तो L का वैल्यू L में डालना पड़ेगा आपको, मतलब एक पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड में डालना पड़ेगा. तो इसकी इंट कैलकुलेट करना. तो अब बताओ किसकी वैल्यू किस में जाएगा, पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड में जाएगा. तो x4 पेरेंट होगा, L होगा और x3 L1 होगा. इज इट क्लियर? x3 L1 होगा, x3 L1 होगा. एवरीबॉडी क्लियर? x3 L1 होगा, x4 L होगा. क्यों? वी आर सेंडिंग द इंट फ्रॉम L दैट इज अ पेरेंट टू L1 इज द चाइल्ड हियर. तो इसके बाद क्या करेंगे हम? तो add type id dot entry to the x5 dot type. What is x5 here? What is x5 here, guys? Look at that. What is x5 here? Come on, guys. What is x5 here? Come on. या नहीं है ना? So that's id. The id dot type we are going to make it that x5 is a new type. That is id dot entry. We are going to do that. It is int we are going to assign. So is that clear? This is enough to understand how the system is passing. You can look at that. You want to compute. I'll tell you the story of this whole thing. D is there. हाँ, तो यही तो है. How do you know? तो आपको समझ में आना चाहिए. Attributed evaluations पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया यार. तो मैं क्या बोलूं इनको. आपसे SDT किया नहीं किया? बिना SDT करके यहाँ आ रहा है क्या? बिना SDT, आपको SDT एवोल्यूशन पता है ना? SDT एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन पता है ना यार? मैं इसलिए दिखा रहा हूं. इसको बोलते इन ऑर्डर कॉन्सेप्ट, इसको बोलते L attributed evaluation, इसको बोलते डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन वी विल एवेल्युएट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इतना सारे तो करके आया ना SDT में. ग्रामर तो दिया, आपको सिर्फ एवेल्युएट करना, थोड़ा मिस हुआ उसको आइडेंटिफाई करना. ये जा रहा है. तो डी में तो कुछ इंफॉर्मेशन पता नहीं है ना, इसमें मालूम नहीं है, इसमें मालूम नहीं है, बल्कि इंट तो पता है. तो यहां पर एक रूल है, टी डॉट टाइप इज इक्वल इंट. तो क्या करेंगे? चाइल्ड का वैल्यू यार ये तो है x इज इक्वल y का वैल्यू समझ में आता, y ऑलरेडी पता है x में डाल रहा है. ये तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको जब पढ़ता है when you write x is equal y, you don't know what you are computing, you are computing at x. ये तो पता है ना, पढ़ना आना चाहिए ना. You are computing at x, but you are depending on y because y known. Depending on y is known, and we are finding x. Clear that point? वो असाइनमेंट में ऑलरेडी है. y का वैल्यू x में डालो, x का वैल्यू y में नहीं डालना. दिस इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल गाइस. आपको यही तो पता होना चाहिए, ऐसे कंप्यूट करना पड़ेगा. मतलब जितने भी रूल्स दिया ना, या जितने भी रूल्स दिया, आंसर तो आ गया, छोड़ो. ये x2 डॉट टाइप वी आर कंप्यूटिंग टू दिस वन, ये int we are computing to this one,
float we are doing here, x4 dot type we are doing here. मतलब राइट साइड ऑलरेडी पता है, लेफ्ट साइड कंप्यूट कर रहे हैं हम. तो यहां कहां से स्टार्ट किया हम? d we don't know, t we don't know, int तो पता है ना, वो तो बेसिक डेटा है, वैल्यू है, टाइप है. तो व्हेन वापस वी आर गोइंग, यहां पर एक ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन बताता ओ इंट रूट में डालना, रूट की इंट में नहीं डालना, इंट को रूट में डालो. एवरीबॉडी क्लियर? तो यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं. इसका ट्रांसलेशन है, मतलब इसके अंदर इंट आएगा, इसके अंदर इंट आएगा. रिमेंबर दैट. सो यहां पर एक कंप्यूटेशन हो गया, एक बार कंप्यूटेशन हो गया गाइस. सेकेंड टाइम आर. अब देखो, अब रूट यहां पर गया, ये ना, ये क्या है, ये क्या है गाइस? आप नीचे जा रहा है, आप नीचे जा रहा है. तो ये देखो D2TL है गाइस, इसकी प्रोडक्शन हेल्प करेगा आपको थोड़ा, इसकी प्रोडक्शन हेल्प करेगा, इसकी प्रोडक्शन. ये पता होना चाहिए T कौन है, L कौन है. ये T है, इंट आया, तो इंट इसमें जाना है ना आपको, वही तो है. यहां से इंट आया तो इसमें डालना पड़ेगा ना आपको. मतलब इंट कहां से आया? T से आ रहा है, और ये कहां जाना पड़ेगा? L में जाना पड़ेगा. तो मतलब T डॉट टाइप विल गो टू L डॉट टाइप. तो यहां पर ए मीनिंग बनता आपको, ए T डॉट टाइप है, यहां पर L डॉट टाइप में जाएगी. क्लियर एवरीबॉडी? यहां जाना ही चाहिए आपको. फर्स्ट कंप्यूट दिस वन, देन यू डू दिस वन. एंड इसकी इंफॉर्मेशन और नीचे पहुंचाएंगे हम, तो नीचे जा रहा है ना, इसमें डालेंगे इक्वल इंट. Clear this point? So what is happening here? Just let me explain everything without having this information. L है, L है, T है, सॉरी. इतना बार इतना देर एक्सप्लेन कर रहा हूं, मतलब इसमें कुछ है डेफिनेटली, इसमें कुछ है डेफिनेटली. तो int is there, this is coming to here, and this is going here, and it's coming here, and we are going to make the entries now. We are going to make the entries now. So we are going to make the two places we are making the entry. Remember, we are making the two places. This add type यहां पर है, यहां पर है. क्यों? ID आया ना. Whenever you get an ID, you must make an entry. Type, add type for that ID. You know that. X you have an entry in the symbol table, Y we have an entry. इसका टाइप कॉलम होगा, दोनों में इंट डालना ही पड़ेगा आपको. एवरीबॉडी, बट आईडी जाने से पहले इंट को लेके जाना पड़ेगा वहां तक. तभी when you go to ID, you will know that I will make an entry as an integer or float, that depends. Yes, clear? Come on, jaldi. In L attributed we first reach L1 ना, then L ना. अरे L दो बार रीच करेंगे, L दो बार, down and up. That is the beauty of L attributed. That is the beauty of L attributed. ऐसे भी आएंगे और दो बार आएंगे ना, ये दो बार रीच करेंगे L को. क्लियर? ऊपर हमको इंफॉर्मेशन पास करना नहीं है, हमको सिर्फ नीचे ही करना. एवरीबॉडी गाइस, हमको सिर्फ नीचे ही करना इंफॉर्मेशन. यहां ऊपर जा रहा है या इंफॉर्मेशन नीचे आ रहा है. सो इफ यू आर हैविंग द सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स वी कंप्यूट अप, इफ यू आर हैविंग इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स वी कंप्यूट डाउन. यहां पर दोनों चल रहा है. इट इज डूइंग लाइक ए सिंथेसाइज्ड and we are doing like inherited here. Are you clear? That is what we have in this question, guys. And if you are looking at this problem one more time, because you will understand what exactly I am speaking each time, because I am trying to explain different way each time. D, you have a T, you have L, and T you have int or float, doesn't matter, and L you have L, comma and ID. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? You compute this information to here. That is called as synthesized concept. And इसको इसमें पास करेंगे type, and then we will send down. This is inherited concept. Clear this point? यहाँ पर एक ID भी है. Right? Everybody, guys, this is how the computation is happening when you are moving like this.
and this is all L attributed grammars. They are evaluated using the same concept. Everybody, no confusion, I think. So already I have answered, guys. The question is answer is already clear, A. But to understand that, you need to know how the declaration system is working. And when you are declaring the statement, in C language, three things are happening. In lexical analysis, int id comma id, id1 comma id2, and semicolon is not important in syntax. In syntax analysis, it makes a tree for that. Okay, D and T, L, semicolon is its choice. Remember, not important now. If you want, you can keep that. That's okay. T int and L, you have L comma id and L को id बनाएंगे. आया नहीं आया? This is the syntax. Semantic और rules add करेंगे. ये int कैसे flow होगा? Okay, this int will flow here, and this type will flow here, and this will flow here. Now automatically we will make an entry. Here one entry is a 2 times symbol entry happens. Here 1 time symbol entry, symbol table entry for type entry into symbol table, and यहाँ पर one more time type entry into symbol table, because दो बार idea है ना. That you can do at this place, that you can do this place. That doesn't matter. So even that information you can understand this way, guys. Everybody? Alright. So if any confusion is there, just do one more time yourself by understanding, because I don't want to explain, already looks very big. Okay. Just for intuition. Now 2018. These are the new questions. You should not ignore them, because in future they might make the questions based on these concepts again. Which of the following is false? Context-free grammar can be used to specify both lexical syntax rules. True or false? True. Why? Because lexical just need a regular grammar. Regular grammar is already context-free grammar, and इसके लिए तो context-free grammar जरूरत है. Indirectly I can use context-free grammar. Are you clear? Lexical analysis, just regular grammar is enough. Syntax rules, definitely context-free grammar. So when I look at both of them, okay, regular grammar is sufficient for both, because every regular grammar is already it is known as context-free. Fine. Type checking is done before parsing. Wrong. It is done after parsing. So far we are doing that. This is the false. If it is MCQ, answer is over. But if it is MSQ, you need to look at high-level language programs can be translated into different intermediate representations. Yes, guys, like I can do 3-address code, I can do SSA code, I can do postfix code. Yes, different intermediate representations you can do, like different in the sense 3-address code, SSA code, and syntax tree, and so many postfix code. There are so many intermediate representations are there. Yes, it is also true. And arguments to a function can be passed using program stack. Yes, and if you want to pass arguments to a function, you need a stack during runtime. Remember that. During runtime, you have a runtime stack, and you can have a program stack separately. During runtime, we have a runtime stack. Remember. So this is also true. Yeah, DAG also there. You have so many for the option C, right? Fine. Let's move on, guys. Look at how the questions are. They are easy, but they are going to take time when you are not knowing the concept. ये concept पहले भी पढ़ सकते हैं हम. Now we have 3 tokens, T1, T2, T3. We have 3 tokens, guys. Like we have identifier, keyword, operator, something like that. T1 represent identifier, you may assume. T2 represent operators, you may assume. T3 represent keyword, you can assume. So we have 3 rules, 3 tokens. Okay, 3 tokens we have, 3 types of tokens. Okay, X question mark means either 0 or 1. That means X question mark means in TOC we say that epsilon or X. Either 0 occurrence or 1 occurrence. Either 0 occurrence or 1 occurrence of the X. And we are going to use the longest possible prefix. Longest possible, guys.
So what is the longest possible prefix, also called as maximal Munch rule, and I'm going to explain again how to scan that. And your string is known as B, A, okay, there is one more B, and then where is it here? A, C, A, B, C. Okay, for safe side, I'm just taking a little bit distance. I need B, A, C, A, B, C. Okay. Now, what is the use of writing this much space? You will understand. And guys, I am going to scan from here. And when I am trying to scan B, what is matched? Here, can I get a B? Yes or no? Yes. I'll first write them because some people don't know what is T1. T1 nothing but epsilon or A and B plus C whole star A. I'm converting into TOC regular expressions. And epsilon or B and A plus C whole star and B. T3 nothing but and C epsilon plus C and B plus A whole star C. Scanning is not completed, guys. Just B. Can I get a B? Just B. So far, yes. B I can get. And can I get a B here? Okay, there are two B's. You take the first B because you need a longest one. You need a longest one. Yes. So I can have a T1. I can have a, what else I can have? T2. I can have T3. Let's focus on who is going to continue that. Who is going to continue that? So from everyone B is coming. B is coming, but not yet completed whole string. Now scan the second symbol B. Can I get the second B here? Yes, I can repeat that. Can I get the second B in T2? Yes, first B, second B is here. Yes, here I can get directly second B. And next, when I am scanning the third symbol A, after BB I can get A. After BB I can't get A. That means T2 is not possible to produce BBA because this is what a longest prefix concept, guys. Which token can produce the longest prefix of your input? Okay, T2 is failed to continue. And T3, can I have A? Yes, yes, because I can get B, A I can get. Now I am going for this next A. T1 failed because in the T1 double B double A impossible. In the T1 double B double A impossible. So T1 failed. So T1 failed, guys. And T2 already failed when I was taking BBA. T2 why it was failed? BBA failed. And next I am talking about the T3. Can I have a double B double A? Look at double B double A S. And in fact that C also I can have in T3. Then after that T3 exhaust. And the maximum, this is called as T3. Only T3 can produce here. That means I got T3, guys. Sorry guys, something is happening. I'll come back. Yeah, T3 is only so far. And T3 is not able to continue because this A can't be produced by T3 now. T3 can produce maximum B, A, A, C. After that T3 cannot. Everybody, now what happened? String is not over. Again lexical analysis starts scanning from here. It starts because token separation happened. Token separated here because you found the longest one. The longest one is longest prefix we have taken, that is matched with the T3. That's matched with the T3. Now token started. Now token separations. Next token begins now. Again same process. Again scan T1 A. सब में तो आ रहा है ना? We'll start again, guys. We'll start again. सब में तो ये आ रहा है ना? Yes, इसमें भी ये आ रहा है. यहाँ देख लेना. यहाँ दो places में है. ठीक है. इसमें भी ये आ रहा है. ये यहाँ पर है ना? इसमें भी ये है. बस पूरा string नहीं है अब तक. T2 है, T3 है. सब आ रहा है. Everybody is trying to come. And A followed by B. Can you have in everyone? Look at that. A followed by B. Yes. A here, B here. And A followed by B. Yes. A is here, but B is at last. And A is there and B is here itself. You can repeat. You can repeat that. Yes. And when I take the C, A, B, C is there. C is there. And A, B, C is not there. So T2 is cancelled. T2 cannot match with the longest one. And A, B, उसके बाद C. And इसके बाद string end happened.
बट किस में एंड हुआ? दिस इज इनकम्प्लीट, यहाँ एंड्स विथ ए, रिमेंबर यहाँ पर ए है, दिस इज नॉट completed, not valid. ABC followed by A is a T1, but ABC is only the right where it can generate, because A, B, C, A and then B, then C. Now string is also over, so it is also generated T3 matching. T1 is not matching here, guys. ABC is the part of the T1 but not the complete string. Now T3 here, T3 is generated, not a T1. When T1 generates, ABC के बाद अगर A है, then T1 will come out answer, guys. In case your string is ABCA, in the last A is there, then T1 comes, T3 T1. So that A is not there. So answer is a T3 T3 is right answer. And everybody clear? This is called as a maximal munch rule. T3 is going to match with the longest prefix of your input, and again T3 is going to match with the longest prefix of your input. And I'm giving a note, if in case you take B, B, A, C, A, B, C and A, then T3 is wrong. From here to the till C, T3 matches, and from here to ABCA, now T1 matches, which is equal T3 T1. If you are going to practice in this example, T3 T1 is an answer, not a T3 T3. Yes, clear? This kind of question may come again, so you should be ready for that. Next, 2018 and 2018, guys. Now they have given some string, don't worry, and you have precedence rules inside this operator, a syntax string. And look at when they are talking about who is having higher precedence, who is having associativity. Associativity is different and precedence comparison between two operators is different. First associativity देखना, तो compare like this, compare here ash and ash, that's all. And two ash को देखना है, when you are looking at this two ash, the right should be first. Right has highest, because without right the left cannot happen. Are you clear? Or you can do another way, there are two ash, this one also you can look at, this is right. Now here also right has highest, means it is the right to left associative. It is right to left associative, guys. Look at that, right to left, because without evaluating right operator it's impossible to go for left operator. Is that clear? Two ash को देखना है, किसी और को नहीं देखना, because you are looking for what is ash. Now you need to compare dollar comma dollar and dollar. दो डॉलर को देख लो, दो डॉलर को, एंड दो डॉलर को, सिर्फ डॉलर ऐश को मत देखना, रिमेंबर दैट. एंड दिस इज द लेफ्ट ऑपरेटर. हु इज द मोर प्रेसिडेंस? बिना लेफ्ट से राइट कभी इवैल्यूएट नहीं होगा, ऐसा नो. तो लेफ्ट हैज मोर प्रेसिडेंस मींस दैट्स गोइंग टू डू लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव, मींस लेफ्ट एसोसिएटिव. क्लियर दिस पॉइंट? क्यों लेफ्ट टू राइट आया? क्यों? विदाउट दैट लेफ्ट हैज मोर प्रेसिडेंस. डॉलर कंपेयर करो तभी समझ में आता. नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट ऐश एंड डॉलर, दैट इज द डिफरेंट. ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, दोनों चेक करना है. डॉलर ऐश पास में ले लो, दूर नहीं लेना गाइस. डॉलर यहां पर है, ऐश यहां पर है. बताओ इसको देखकर कौन हाईएस्ट प्रेजेंस है? बिना evaluation of dollar, can you do with the ash? No. So that means dollar has highest and ash has lowest. Remember that. So dollar is highest, वो लेफ्ट में आओ राइट में आओ चलेगा, लेकिन डॉलर बिना डॉलर से ash कभी नहीं होगा. And ash is lowest precedence in the given tree. Are you clear this point? Everybody? But पूरा रिलेशंस एग्जाम में कुछ भी आ सकता, आपको कंप्यूट करना आएगा तो खत्म काम. यू कैन चूज ऑप्शंस केयरफुली. डॉलर हैज हाईएस्ट, ये तो सही है. एंड इज इट लेफ्ट एसोसिएटिव? लुक एट दैट. डॉलर इज लेफ्ट, सही है, वो भी सही है. एंड ऐश इज राइट एसोसिएटिव, वो भी सही है, वो भी सही है. बट चेक कर लेते हैं, रिमेनिंग ऑप्शन को भी चेक करना है ना, कभी मल्टीपल चॉइस होगा तो. ए सही है तो बी. ऐश इज हाईएस्ट, गलत है.
तो छोड़ो बी को छोड़ो, एंड डॉलर इज हाईएस्ट, ये सही है, एंड इज लेफ्ट एसोसिएटिव भी सही है, बट ऐश इज द राइट एसोसिएटिव गाइस, इसलिए सी को डिलीट किया हम, एंड डी डॉलर हाईएस्ट, ए भी सही है, राइट एसोसिएटिव ये गलत है, ये गलत है, एंड ऐश इज, ये भी गलत है, ये राइट एसोसिएटिव है, तो डी भी हटा दिया। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बिकॉज एवरीथिंग इज विजिबल इन द ट्री, देन यू आर सो हैप्पी, नथिंग टू वरी। होल ग्रामर कन्वर्टेड इनटू ट्री, एंड जस्ट लुक एट द रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेटर्स। ऐश कंपेयर किया, एसोसिएटिव बनेगा, ऐश डॉलर कंपेयर किया तो हाईएस्ट लोएस्ट प्रेसिडेंस बनेगा, रिलेशंस। ओके 2018 guys, look at that, 2018, and next let's move on to 2017. And if I am not able to complete today guys, and definitely I will take up the session in coming Saturday and Sunday, but be tuned with these classes which are going to help you to understand the concept what you have studied. Remember that. 2017, match the following input to the compiler phase. So this is input to the compiler phase, input to phase, remember that. And okay, input to the phase, this is the phase, yeah, that process it. Right column is the phase and left column is the input to the phase. Now syntax tree is an input to whom? Syntax tree is an input to whom? Everybody guys? So ये थोड़ा कंफ्यूजन है, क्यों गाइस? कुछ लोग ऐसे हैं, एक सेमांटिक ट्री है, एक सिंटैक्स ट्री है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है गाइस. सो बेटर आई एम नॉट लुकिंग एट दिस वन. I am not looking at this one. I will tell you why. I will tell you after this point why so many people they wrongly interpret at syntax tree. I will tell you slowly. Wait. Character stream is an input to. Character stream means your program guys. Token stream तो syntax के लिए. Yeah. अरे ये जल्दी नहीं बोलना भरत हिंदू. I'm just waiting. Q से start किया. मैं P से start नहीं किया. I will tell you the reason later. Okay. Q4 बन गए. Q4 है and R intermediate representation. The 3 underscore is an input to code generation. Code optimization you can ignore guys. That is R is okay, this is a 4, R is 1. That R is 1. R is 1. So answers भी delete हो गया. आपको सिर्फ ये चेक करना है C सही है नहीं है. S2 token stream is an input to syntax analyzer. Yes, true. Token sequence of tokens goes as an input to the syntax analysis. That is S is 2. But एक confusion है syntax tree. Guys, a syntax tree is also representation of intermediate code. ये code generator के लिए input भी हो सकता, इसलिए मैं रुक लिया. Guys, ये P है. It can be. Look at that. If you are assuming parse tree as a syntax tree, you can assume guys parse tree you can assume as a syntax tree because this is going to represent a syntax. But हमेशा इसकी definition अलग है. तो P के लिए exact answer क्या होता? Actually 1 होता, नहीं होगा तो that it can be input to the semantic analyzer. Remember that. तो that is going to be important. According to option तो समझ में आ रहा है, ये P जाएगा 3 पे. लेकिन कभी कभी ये सिंटैक्स ट्री इज गोइंग टू बी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ये कोड जनरेटर के लिए भी इनपुट बन सकता. दिस इज आल्सो सिंटैक्स ट्री. यू मे अज्यूम पार्स ट्री, दैट इज इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, बट इट इज आल्सो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन. इसलिए आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड इट हैज सम रॉन्ग इंफॉर्मेशन. मल्टीपल ऑप्शंस आर पॉसिबल गाइस. So basically nobody assumes syntax tree is a parse tree as per the standard definitions, but as per this given data people says blindly what is the syntax tree, parse tree, they mix it. Okay, so if you are assuming syntax tree is the parse tree, then only option C is right, otherwise no option is exist, because we know syntax tree is the intermediate code, intermediate representation. Okay, here according to my knowledge I have no option here, but by assuming I have to choose one, so we may go to C. That's all I can tell you. We may go to C. Clear that point? Yeah. You may choose the C, but I'm also saying that I don't prefer C also.
Fine. Because most suitable one you have to choose, that is only one left. Consider the following expression. Oh, ये बहुत easy है guys. Which of the following grammars is not left recursive but it is equivalent to G? ये तो left recursive grammar है guys. They have already given left recursive grammar. You need to identify who is the non-left recursive grammar. है ना? कुछ लोग बहुत easily कर सकते हैं काम को. By looking at the questions, you can delete the data. Look and see, left recursion still there. Still left recursion is there. देखना नहीं आपको, delete कर लो सीधा. यहां भी still left recursion है, तो इसको भी delete कर लिया. Now you have to look at this one and this one. Which one is the right one? इसमें तो left recursion तो नहीं दिख रहा है. So you need to apply your knowledge. You need to apply your knowledge. Remember that. So now I'm trying to do. Guys, you know, by looking at the grammar, okay, they have chosen the same order. I told you in my class, the non-left recursive grammars, you can make so many orders, so many grammars too. It all depends on how do you approach. So as per the standard algorithms, first try to eliminate from E, then go to T, then go to F. Is it clear? First take the E and eliminate here. This is step 1. You know that. E minus T or T. Then आपको पता है ना? आपको पता है ना? तो we have a left recursion here. So what do you do? Substitute, that use the formula. T यहां पे देख लेना x यूज कर रहा है, तो आप भी x यूज कर लो, आप भी x यूज कर लो. x derives that E minus T, इसको right recursion बनाना, तो minus Tx और एप्सिलॉन. ये पाइली प्रोडक्शन के लिए आप अगर देख लिए ना, कैपिटल डी में कुछ आ रहा है, कैपिटल सी में कुछ आ रहा है, तो ये कौन मैच करता? यही तो है ना, मैच कर रहा है. इसमें क्या गलत है? E to Tx है और कुछ और भी कर रहा है काम, वो नहीं चाहिए हमको, वो नहीं चाहिए हमको, कुछ और भी कर रहा है. तो आप देख लेना ये सही होगा नहीं होगा, मुझे तो मालूम नहीं है गाइस. ऑप्शन डी, तो ऑप्शन सी तो एक मैच हो गया, तो पूरा कर लेते काम, है ना. ये हो गया. नेक्स्ट टी का प्रोडक्शन ले लो. सेकंड स्टेप, T to T plus F or F. And you know that you have a left recursion, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप? इसमें तो कैपिटल ही नहीं है, तो सब डोंट सब्स्टिट्यूट, डायरेक्टली T to F. ये देख लेना y लिख रहा था, आप भी y लिखो. y T डैश नहीं लिखना, y लिखो. y derives plus F y और एप्सिलॉन. ये है, ये इससे मैच हो रहा नहीं हो रहा है. And F is already free from left recursion, तो as it is लिखो, तो आंसर is going to be C. And D गलत क्यों है? आप चेक करो गाइस, ये F प्रोडक्शन ही नहीं है उसके अंदर. F चाहिए था हमको, F डिलीट किया, और F डिलीट करने के बाद सारे सही सब्स्टिट्यूट किया नहीं किया. आप चेक कर लो गाइस, he has done so many missing strings inside D. तो you check why D is wrong. That's all. Okay, so I just proved when you apply your concept directly, you can get a left recursion free grammar. Fine. Next one, a follow of Q guys. And this is the most important question for you always. Most important question from the compiler guys. Whoever knows how to compute the follow set, you are maximum safe side guys. First बहुत लोग को आता, but follow ही problem करता guys. Follow ही करता. And इसको देखो पहले, मतलब आप लिखना स्टार्ट करो, R को देखो, बट R तो दे रहा है W एप्सिलॉन, तो W को ले लो और एप्सिलॉन यहां सब्स्टिट्यूट करो. यस भी डिपेंड करेंगे हम. फॉलो ऑफ क्यू नथिंग बट फर्स्ट ऑफ आर से सिर्फ W ले लो, बट एप्सिलॉन नहीं लेना आपको. एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट देयर एंड यू विल गेट यूनियन विद फॉलो ऑफ S, सॉरी फर्स्ट ऑफ S. यूनियन, अरे यार क्या हो रहा है, यूनियन. इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ S, बट S को एक बार दोबारा चेक करो गाइस, पूरा एक बार डिलीट करके ये Q यहां तक पहुंच गया. एंड S देख लेना, Y आ रहा है तो Y भी होगा. अरे क्लियर? ये कैसे आया? एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा है, फर्स्ट ऑफ R, पर इन फर्स्ट ऑफ R तो एप्सिलॉन कर रहा है, तो माइनस एप्सिलॉन यूनियन first of S. S is giving other than the epsilon, so this is your answer. If S gives epsilon, then first of S minus epsilon union follow of P जाएंगे.
right? In the exam, in future GATE exams, they might ask which of the following is the right answer. Then they might ask W comma Y, or they can ask even formula also. First of R minus epsilon union first of S can compute this follow set. Clear everybody? Okay, slowly you have to understand what is the meaning of that. It's basically, I will do another way. Those people who are very new, it's just like first of RS. First of RS. R के अंदर आपको दो ऑप्शन था. One is WS, another one is epsilon S. R. So इसमें से WS से आपको W आया and S से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ S. तो फर्स्ट ऑफ S आपको Y दिया तो Y कर लिया. Both ways you can do it. Yes. Next one. तो आंसर तो ठीक करके चलते हैं. Next one guys. ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है guys. It's a combinations question. You know mathematics, how many places we use here. And we have something here. Please read the data guys. पूरा तो आप पढ़ सकते हैं. मैं एक प्रोग्राम क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सीधा डायरेक्टली. Consider the program P. कुछ प्रोग्राम है following the above grammar containing 10 if terminals. You are writing a program with 10 if terminals guys. If terminals. The number of control flow paths in P is dash. Now control flow बनाना है guys. तो आप प्रोग्राम लिख रहा है तो पहले लिख लेते ना. If प्रोग्राम लिख लेते. If कुछ एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन तो मतलब कुछ टर्म में आईडी है ऐसे मान लो. If कुछ टू है एक्सप्रेशन में हम ए ला सकते हैं. ए लिख लेते सीधा. If expression then some expression and else भी है वो नीचे लिख रहा हूं छोड़ दो. एक्सप्रेशन बट गाइस इसके बाद स्टेटमेंट तो बाद में आ रहा है. इसमें से कितना इफ आया? सिर्फ वन इफ. एंड इस स्टेटमेंट को बाद में रिप्लेस करेंगे ये सेम स्टेटमेंट से. तो क्या बनेगा? ये तो एक हो गया. तो इफ यू आर गोइंग टू राइट ए प्रोग्राम इट्स गोइंग टू हैपन लाइक दिस. इफ एंड एल्स भी होगा. इफ देन समथिंग एल्स समथिंग एंड दोबारा इफ आएगा. ये रिकर्सिव प्रोसेस है. एल्स समथिंग. इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग अबाउट? यहां सेमीकोलन हो गया, यहां सेमीकोलन हो गया एंड ऐसे ही आपको 10 if else आएगा whenever you don't want and you can stop the recursion. Null. This is a null statement. 0 is a null statement here and you can get the 10 if statements. This is the only way you can do. And at this place the S might come that will terminate and this is your program. 10 ifs guys. 1 2 3 and this is the 10th one. Remember that this is the first, second and this is the 10th one. Assume that. Now how the control flows? Most of you should know how the if then else works. If then, okay, let's say write E. Okay, let me write something else to understand. If E then some statement else some statement. Okay, E means some statement. And tell me how this flow happens. E comes and E will decide go to some other statement. Else you come to here, you will go to another statement, right? Let's write E1 E2 E3. So this is E2, this is E3 and E1 is your condition. After that both will be mixed. And guys, I say if else, again there is one more if else, again there is one more if else, then again let's say this is E4, then E5, else E6. Everybody, then यहाँ से E4 start होगा. ऐसे ही आपको ये स्टेटमेंट ये कुछ अलग वाले है. ये कंडीशन हो गए यहाँ पर. दोनों यहाँ पर मिलाएंगे हम. E4 again true or false. यहाँ पर E5 E6 दोनों E7 पे मिलेंगे. E7 is a condition for another one. Guys अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना पाथ्स है?
कितने पाथ से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितने पाथ से, 2 पाथ्स, एंड यहां से यहां तक 2 पाथ्स, एंड यहां से यहां तक 2 into 2, 4 paths. Guys, if I have 2 if statements, I have 4 paths. If I have 10 if statements, 2 into 10 times, क्या होगा guys? 2 power 10 paths, 2 power 10 paths, that's equal to 1024 paths. यही तो न्यूमेरिकल टाइप है गाइस, यहां पर ऑप्शंस नहीं है, यू हैव टू आंसर इट केयरफुली. 1024. That takes much time because of you need to understand your grammar. ये ग्रामर ही समझने आया, प्रोग्राम कभी समझने आएगा. ग्रामर बता रहा है if else is the one. If you want to write another if else, you have to write separately. It's not nested. It is not nested. Remember, it is a different if else. If it is nested, you may get a different answer, guys. Are you clear this point? They are not nested if else. They are independent, individual if else. Each if else has 2 paths, so that there are 10 if else. So 2 into 2 into 2, total you have 1024 paths. If you reach from the first if to last if, the end. Remember that. Okay, this is the concept, guys. Next one, GATE 2017. Which of the following statement is about parser is correct? Which of the following statements about parser, canonical CLR means simply LR is more powerful than SLR1? Yes. SLR is more powerful? Wrong, because less powerful than LELR1. And SLR is more powerful? No. You know that SLR is less powerful than LELR1 is less powerful than CLR1. Right. इसको देखकर बताओ सिर्फ 1 only is the right. Come on, very easy question, theoretical question, guys. Okay, 2017, and this is about SSA code, static single assignment code. Whenever you are writing static single assignment, I always have a doubt. Have you understood this expression? Isha, first you convert into expression and write the best 3 address code. Then write SSA code by using renaming concept. ये मेरा क्लास में तो यही तो हमेशा कॉन्सेप्ट है गाइस. आप लोग पता नहीं कैसे करते रैंडमली, बट लेकिन दिस विल गिव यू द बेस्ट आंसर ऑल द टाइम. एंड एक्सप्रेशन, when you are writing best 3 address code, you need to use optimizations. What kind of optimizations? I told you in the class. Reordering, you should know, and algebraic simplifications are very important. Like x minus x, cancel it. And these two are very important when you are writing 3 address code. They might be given already 3 address code, but don't look at it. Look at expression always. Look at expression always. Okay, guys. And anybody not aware of Unacademy, guys? Unacademy has the very good educators, and many more are going to join in future. And if anybody is seriously preparing for GATE exam, and this is the right time before starting the 2022 batch, and if you are preparing for 2022, and it is the right time to start preparing for GATE, because you are in right track. Before the batch, we are going to guide you which batch, how do you plan for cracking the exam. Okay, so please take the subscription on Unacademy and download the Unacademy app, because we also have the Android and Apple phone also you can use to download the Unacademy Learners app. And please use DEVALIVE referral code to access all the free classes too. Fine. Now are you ready to convert this method? Let's do it. And can you write an expression first? पहले ये भी नहीं आता बहुत लोग को. You need to do scanning from down to up. मतलब आप रिवर्स से स्टार्ट करना. Q is equal P plus Q. P तो ये पूरा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको. मतलब आप लिखना पड़ेगा U star V. क्लियरली आपको करना पड़ेगा. Q मतलब ये सारे आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पर. दैट इज P star C.
and you should know what are you substituting also. In that uv तो बाहर से आ रहा है, कुछ substitution की जरूरत नहीं है, but p is there, that p is actually computed from here, है ना. तो that p we are going to substitute, तो लिख लेना u star v plus op है, that is a minus b star c, and this is your expression. इसको देखना, not 3 address code. इससे बेस्ट 3 एड्रेस कोड आपको निकलना है, बेस्ट 3 एड्रेस कोड. आप यू मे यूज अ रीऑर्डरिंग, यू मे यूज अ कैंसिलेशन. इफ यू सी a प्लस b माइनस a, आप इसको कैंसिल करके b लिख सकते हैं आप. इसलिए आपको एक्सप्रेशन लिखना ही पड़ेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेस्ट 3 एड्रेस कोड. जो 3 एड्रेस कोड दिया वो बेस्ट नहीं हो सकता, यू डोंट नो दैट. ओके, नाउ हाउ टू राइट द बेस्ट 3 एड्रेस कोड. आपको चेक करना पड़ेगा how many variables are coming from before this expression. ये कोई देखना पड़ेगा आपको. u बाहर से आ रहा है, v बाहर से, a बाहर से, b बाहर से, c बाहर से, है ना. ये कोई भी डिलीट नहीं कर सकता अभी. क्यों? this is already, it's a good expression, and u v a b c values you don't know, nobody can delete them. पहले क्वेश्चन को देख के बता सकते मैं मिनिमम 5 वेरिएबल्स तो मुझे जरूरत है गाइस. तो आई एम ट्राइंग टू राइट the best 3 address code, optimized one. उसके बाद बेस्ट SSA कोड बाद में, अभी नहीं. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट. ओके, वैसे भी सब कुछ तो फ्री है. u स्टार v आप u यूज कर लो अभी. इसके बाद तो फ्री है दोनों, इसके बाद दोनों फ्री है. u स्टार v कहीं से भी स्टार्ट कर सकते गाइस, नो रूल्स. मैं u में स्टोर किया एंड ये u में स्टोर किया, और a माइनस बी. अब तो बहुत सारे फ्री है. स्मॉल v भी फ्री है, और अभी ये भी फ्री होगा फ्यूचर में, ये भी जरूरत नहीं है किसी को. तो आई एम यूजिंग जस्ट a, आई एम जस्ट यूजिंग a गाइस. अब तो आपको पता है v भी फ्री है, स्मॉल v भी फ्री है. यू कैन मेंटेन द सेट सेपरेटली. एंड इसके बाद ये दोनों करना पड़ेगा, मतलब ये स्टार c, ये दोनों a में स्टोर कर रहा हूं. अब तो कितना फ्री है गाइस, अब c फ्री है और स्मॉल v फ्री है, v भी फ्री, 3 फ्री है गाइस. देन u प्लस a, दैट इज यू कैन स्टोर एनीवेयर, u or a, इट्स योर चॉइस. तो u इज इक्वल टू u प्लस a. नाउ q भी जरूरत नहीं हमको. दिस इज द बेस्ट 3 एड्रेस कोड, बट दे आर नॉट आस्किंग अबाउट बेस्ट 3 एड्रेस कोड, दे आर आस्किंग अबाउट स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट. रिमेंबर दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट 3 एड्रेस कोड हियर. क्वेश्चन इज अबाउट SSA code. SSA means static single assignment. तो अब बताएं, अब देखेंगे इसको क्या करना है. Is it clear? अगर if I am using best 3 address code, how many variables required? ऊपर से 5 वेरिएबल, अंदर एक्स्ट्रा टेम्पररी जरूरत ही नहीं है. So 5 variables using 3 address code. Remember that. But लोग पता है आपको, है ना, they keep on answering SSA code is also this wrong. And what is SSA code guys? Look at A already has a definition, B already has, and C already has, and U already has, V. They are already having definitions. Already having definitions means assignments. That is the reason we are using them directly. Now we can't change in future because of their every assignment is static. The name of the code itself, static single assignment, means every variable has only single assignment. There is no second assignment. So these variables they should never come as left side. Then what do you do? A renaming guys. Renaming. Start from here. U star v. तो u में नहीं लिख सकते कि u already has assignment. तो क्या करोगे? रीनेमिंग u1. तो u1 फ्यूचर कब यूज होगा? लास्ट में. तो रिलेशन बनाना पड़ेगा अभी, कि फ्यूचर में याद नहीं रहता आपको. तो अभी मैं क्या किया, u1 में लिख लिया, और लास्ट में u1 आएगा. तो आई हैव रिमेंबर दैट टू. या सो वी हैव अ शॉर्टकट मेगा. दैट्स गुड पॉइंट. ये कितना स्टेटमेंट्स है? 4. तो 4 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आएगा. ऑलरेडी 5 था, 9. ये बेस्ट शॉर्टकट था गाइस. 5 प्लस 4 इज इक्वल 9. द बेस्ट आंसर है 9. ये शॉर्टकट है. तो लेकिन लिखना भी आना चाहिए ना. कभी कभी
एग्जाम में ऑप्शंस भी आएगा SSA कोड्स, तो लिखना भी आना चाहिए आपको। नेक्स्ट ए माइनस बी यूज कर सकते बट मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये में मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो A1, ये 1 कहां पर है, यहां भी है, लेकिन लास्ट ये अलग है गाइस। तो अगर यहां पर A1 लिखा ना, थर्ड स्टेटमेंट में A1 लिख लो, फोर्थ स्टेटमेंट में A है, वो A1 नहीं है, कुछ और है, रिमेंबर दैट, A1 स्टार C। अब ये दूसरी A है A2, ये A2 है गाइस, तो यू नीड टू हैव अ डिपेंडेंसी, यहां A2 आएगा, सेम A2 वी यूज हियर। अब U3 यूज कर लो, U3 दिस 3 बिकॉज यू कांट यूज U2 यूज कर लो, U2 because U2 was not there, it's okay, U3 is also fine, U2. So total the 4 extra variables, that is U1, U2, A1, A2, 4 extra temporary variables, 4 additional, so total 5 plus 4 is the 9. Yes, clear? नहीं संदीप पांडे, कल देखेंगे, टाइम होगा तो करेंगे, मोस्टली कल विल नॉट हैपन एंड I will do whenever we get a time on Saturday, Sunday, but we keep on doing till the completion of all the gate questions. Remember guys, if you are watching this video, please don't forget to like the session. Okay, fine. So look at this gate, तो actually options are there, मैं तो कर लिया guys, options are there guys, तो options को चेक करना था बस, right? तो सेम कोड को लेकर आप ऑप्शंस को चेक कर लो, डायरेक्टली यू कैन रीनेम देम, राइट? कैन यू डू दैट योरसेल्फ? इसको रीनेम कर लेना, बिकॉज 4 वेरिएबल्स है, तो यहां P1 बनाया, तो यहां पर P1 बना सकते हैं आप। अगर यहां पर Q1 बनाया, यहां पर Q1, यहां पर P2 तो Q2, तो यहां पर Q2, ये कोड है गाइस। क्लियर दिस पॉइंट? दिस इज योर आंसर। रीनेम तो कर सकते हैं ना, डिपेंडेंसी है, सीधा डिपेंडेंसी है, करना है आपको। P1 Q1 ये वाले डिपेंडेंस है, ये P2 ये 3 डिपेंडेंसीज को यू शुड नॉट लूज। ओके, यू कैन डू दैट गाइस। सो आंसर शुड मैच विथ B, जस्ट गो एंड चेक। एंड मैं तो P1 यूज किया, वो P3 यूज किया, तो P3 यहां हुआ तो यहां P3 होना चाहिए। मैं तो Q1 यूज किया, वो Q4 यूज किया, तो Q4 यहां होगा तो यहां होना चाहिए। मैं तो P2 यूज किया है, वो P4, ठीक है ना? एग्जैक्टली वही तो है कोड। देखा डिपेंडेंसीज, सेम 3 डिपेंडेंसी वी हैव प्रिजर्व हियर, सेम 3। मैं क्या लिखा था? P1 इज इक्वल A माइनस B, वो क्या लिखा था? P3। एंड मैं Q1 लिखा था P1 स्टार C, वो लिखा था Q4। एंड मैं लिखा था P2 बिकॉज P1 ऑलरेडी खत्म हो चुका, तो ये था कोड P2 प्लस Q1। ये मैं एक्चुअली क्या लिखा था यहां पर? Q2 लिखा, वो Q5 लिखा, बस आपको रीनेम कर लो, आंसर आ जाएगा, राइट? दिस वाज आवर कोड, इट्स एग्जैक्टली सेम। Okay, remaining you check it, they are going to be different answers. Otherwise what you do, we have other technique also. Every option you write an expression, those which expression matches with actual one, that is the right one. But also look at, यहां पर P1 आया, तो यहां पर P1 नहीं आना चाहिए, तो कोड गलत है गाइस, और कहीं पर दिक्कत हो रहा है, बस ऐसे कुछ ऑप्शंस ऐसे डिलीट कर सकते हैं हम, राइट? एंड इसमें तो P4 Q3 P4 नहीं है बिल्कुल, तो P4 यूज कर रहा है, ये भी गलत है। इसमें PQ यूज कर रहा है, इसमें PQ तो बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है। देखो P यूज कर रहा है, P तो बिल्कुल नहीं है यहां पर, तो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस आर ब्लाइंडली यू कैन डिलीट। Exactly, Piyush. Given code, Shivang, thank you, good point. Piyush, given 3 address code, we really don't know how it can be optimized. आपको रीऑर्डरिंग सीखना ही पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन सीखना ही पड़ेगा। क्यों? पता चलेगा ना, एग्जाम क्वेश्चंस है, तो व्हाई वी आर फॉलोइंग ए स्ट्रेटजी। एंड दुनिया में ऐसे एल्गोरिथम नहीं है गाइस, दैट यू नीड टू अप्लाई ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर नॉलेज। रिमेंबर, ये ऐसे ही अप्लाई करना, कोई बताएगा नहीं। क्यों? आई वॉज टीचिंग फ्रॉम मेनी ईयर्स, सो आई फाउंड दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर कंपेयर टू एनीबडी।
कंपेयर टू एनीबॉडी आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं ब्लाइंडली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, एक सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर. ठीक है, मैच द फॉलोइंग, ये तो बता सकते, मैच है ना, बस लेक्सिकल regular expressions. Q, you can represent the tokens using regular expressions. Top down parsing follows leftmost derivation. Semantic analysis does type checking, and runtime environment you will create activation records, but you can just match it. I have kept it clearly. Okay, just go and then match it. Very easy guys. वो lines हो गए तो बाद में ये तो काम easy होंगे. Next, what will be the output of the following code when parameters are passed by reference using dynamic scoping? कैसे, ये तो C language नहीं है, remember that this is the runtime environment of compiler. मैं तो C language में पढ़ाया था इसलिए कंपाइलर में यूज नहीं किया इसको. runtime environment, right? Programming languages can use any kind of parameter passing techniques, any kind of scoping, depends on the implementation of the program. Remember that. प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन से पहले हम ये डिसाइड करते हैं, रिमेंबर दैट. ओके, दैट्स व्हाई कंपाइलर वी बिल्ड दैट वे. नाउ डायनामिक स्कोपिंग, दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन कॉलिंग, राइट? दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन कॉलिंग. तो आपको करना पड़ेगा फर्स्ट मेन. तो मेन गाइस, मेन वी आर कॉलिंग द मेन. मेन के अंदर m फंक्शन है, m ऑफ a. m ऑफ a मींस एक्चुअली यू आर पासिंग एड्रेस ऑफ a इनडायरेक्टली, बट ये कहां पर है? ग्लोबल है गाइस, तो बाहर लिखेंगे हम. तो m इट्स अ कॉल बाय रेफरेंस. रेफरेंस देखो C लैंग्वेज में तो यहां m ऑफ एड्रेस ऑफ a लिखते हैं, पर ये C लैंग्वेज नहीं है ना, तो नहीं लिखते हम. वो सिंटैक्स ए रिप्रेजेंटेशन है, ये तो जस्ट जनरल सिंटैक्स, रिमेंबर. तो एक्चुअल C लैंग्वेज में ऐसे दिखता m ऑफ एड्रेस ऑफ a. तो हम m फंक्शन में जाएंगे और ये देखो y है, तो y is a variable which is a local that is going to point to your global variable, because this is how we passed address of a from main to m. Then पहली statement आया a is equal 1. तो what will happen guys? जल्दी, what will happen guys? तो 3 1 बनेगा. आर यू क्लियर दिस पॉइंट? 1 बनेगा. नेक्स्ट a इज इक्वल y माइनस a, एंड यहां पर ये कहां पर है गाइस? ये लोकल है ग्लोबल है? ये लोकल है ग्लोबल है? अगर a लोकल है कुछ अलग है, ये बताया नहीं ये लोकल लेना है ग्लोबल लेना है, मैं तो a ग्लोबल वाले लेके जा रहा है. अगर a लोकल ले लिया तो मैं चेंज करूंगा प्रोग्राम को, रिमेंबर दैट. मेरा स्ट्रेटजी एक्चुअली जनरली व्हाट शुड आई फॉलो? एंड a इज इक्वल y माइनस a. y कौन है? वही तो है 1 माइनस 1, क्या होगा गाइस? 0 0. एवरीबॉडी मैं थोड़ा देर के बाद प्रोग्राम को चेंज करूंगा अगर मुझे आंसर नहीं आया, याद रख लेना. एंड n ऑफ a मतलब n ऑफ एड्रेस ऑफ a, n ऑफ एड्रेस ऑफ a आने के बाद प्रिंट a तो करना ही है हमको. एंड n ऑफ a, that is n function we are going, and x मतलब ये तो एड्रेस ऑफ ये पास किया ना, तो x is going to point to which one? The a that you have passed. Address only, right? Same a. Then x is equal to x into a, that is 0 into 0 0. Print x 0. guys कहीं पर 0 देखा नहीं है ना? कहीं पर 0 देखा नहीं है ना? But लेकिन he was doing some other way. And how do you know that? That is what. Now my approach is wrong. इसका strategy अलग है, वो अलग है. मैं क्या अलग है मैं ये बता रहा हूँ. He was trying to do. ये ऐसे कोड नहीं देना चाहिए था, इनको गलत ले लिया. ये a है, लोकल है, ये बताया नहीं, पर लेकिन वैसे ही आपको आउटपुट आएगा. नहीं ये तो नहीं आएगा. Actually this is the wrong way to understand, because he has to tell exactly the declaration part. तो लोगों को चांस है ये एक ग्लोबल अज्यूम करने के लिए, ऐसा नो गाइस. तो ये वाज द लोकल. तो इट वाज अ वन मिस्टेक. ही वाज नॉट सेइंग दैट वेयर वी आर डिक्लेयरिंग एग्जैक्टली. तो दिस इज अ वन स्मॉल मिस्टेक हैपेंड इन दिस कोड. बट अब ये तो आउटपुट तो नहीं आया ना, सो वी विल गो अगेन and we'll just reframe the code as per our understanding, like int
ये इज इक्वल 3, इसको ऐसे देना चाहिए था, void n ऑफ, वो int x सी लैंग्वेज में करते हैं ना, इसी लैंग्वेज नहीं था, ऐसे रैंडमली दे दिया, चलेगा, ऐसे भी दे सकते, पर इनको बोलना पड़ेगा, नहीं बोला था ना, तो मैं रिफ्रेम करके समझा रहा हूं आपको, int x और एक पॉइंटर बनना चाहिए था सी लैंग्वेज में, तो आपको समझ में आया ना, पूरा लिख के यार, और सिंटैक्स बदलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब लोकल मान लो, स्टार्ट कर लेते दोबारा, ए इज नाउ ग्लोबल, और ये मेन एग्जिट करेंगे हम दोबारा मेन के अंदर सिर्फ एक ही कॉल है, m ऑफ एड्रेस ऑफ ए, तो वी हैव m फंक्शन, रिमेंबर m फंक्शन, देन y इज गोइंग टू पॉइंट टू एड्रेस ऑफ ए पास किया, बिकॉज कॉल बाय रेफरेंस करा था, तो इसलिए पॉइंट किया, एंड देन इसके अंदर एक गलत किया, ए बी लोकल था, इसके अंदर 1 स्टोर किया, एंड अब a इज इक्वल टू y माइनस ए, जब एक्सिक्यूट किया y में 3 है, a में 1 है, 3 माइनस 1 2 आएगा, a 2 इसके अंदर स्टोर करेंगे, इज इट क्लियर। अब n ऑफ a मतलब एड्रेस ऑफ a रिटर्न आने के बाद प्रिंट कर लो, याद रख लेना, and we are going to some other function called, this is the different function and activation record n, and you are passing address of a, right, तो here एक x है, and a x is pointing to, because the dynamic scoping it will point to this a, not that a, that is the main difference. If you don't have a local declaration, this will point to that global a, you got a 0 answer both sides, but now understand this x is pointing to this one, now x is equal to x into a, मतलब x is equal to x into a, x भी 2 है, and a किसको एक्सेस होगा, किसको एक्सेस होगा गाइस, ये किसको एक्सेस होगा, ग्लोबल को, नहीं तो प्रीवियस फंक्शन में गाइस, प्रीवियस फंक्शन में, because in the dynamic scoping that function can see the variables of this function, if not previous function in the calling sequence, obviously. So we can challenge such questions guys. Global नहीं है guys, global नहीं है, ये तो गलत कर रहा है, main called m called n, if you want to access here, it can see the variables of this one, if not here, then it will see here, remember n will access a of m only, because that variables visibility depends on the calling sequence, ये याद रखना है, ये static scoping नहीं है, in static scoping that a means global, but this a depends on who called this function, depends on which function, calling function of n, who called this n, m called this n, so m का a लेंगे, m में नहीं है, main में नहीं है, global, this is the strategy guys. So x is 2 and a is also 2, and x means it's a call by reference, we get there only, we will store 4, now after that print x, that means print x is 4 only, print 4, so first output is 4, now we will come back, we will print a, now here also a is 4, so we will print another one, and when we come back and will return, so 4 comma 4, yes, okay, is it clear? Yes. If you don't find if a is not available, remember that if a is not in n, then check m, again if a is not in m, then check main, if a is also not there, then go for global. This is dynamic scoping knowledge, it never depends on the syntax, it depends on only the calling sequence environment, runtime environment, the calling sequence is created, it's going to look at the previous function and previous to previous and so on, it never looks at the global. Everybody,
So have a knowledge of this dynamic scoping. Okay guys. Okay, how many 2016. Okay, next one. Which one of the following grammars is free from left recursion? बस सिर्फ free from left recursion, आपको इतना ही देखना है गाइस. यहां लेफ्ट रिकर्शन है ना, तो हटा दो, इसमें चेक कर लो. यस है, यहां भी एस है. ये कैसे पता? यस नहीं है ना, सॉरी गलत है, नहीं है. तो इसमें कुछ समझने आ रहा है, इसमें है नहीं, तो चेक कर लेना. ए है, ए से बी जाओगे, बी से ई आएगा तो रिकर्शन नहीं आएगा. एस से बी, बी से ई, एस कभी नहीं आएगा, ये तो सी है, तो एस डिराइव्स, यस कभी नहीं आ रहा है, इम्पॉसिबल. एंड ए से बी चेक कर ले, ये पॉसिबल होगा क्या? ये बी है, बी से ई आ रहा है, इम्पॉसिबल. एंड बी ई आ रहा है, तो यहां पर बी इम्पॉसिबल. तो हर नॉन टर्मिनल पे नॉलेज लगाना है गाइस, हर नॉन टर्मिनल में. क्यों? यू डोंट नो विच नॉन टर्मिनल क्रिएट्स लेफ्ट रिकर्शन. एस, ये से एस कभी नहीं आएगा, तो यहां पर लेफ्ट रिकर्शन नहीं है. ये से ए आया तो लेफ्ट रिकर्शन है, तो इसमें लेफ्ट रिकर्शन है कहीं पर. एंड यहां पर एस है, एस यस कभी नहीं आएगा, एस कभी नहीं आएगा, एस कभी नहीं आएगा, ठीक है. ए, ये कभी नहीं आएगा, तो ठीक है, नो रिकर्शन. एंड बी कभी नहीं आएगा, तो नो रिकर्शन. इसमें नो लेफ्ट रिकर्शन. बहुत जल्दी समझने आता, नो लेफ्ट रिकर्शन, याद रख लेना. एंड एस, यहां से एस आएगा नहीं आएगा गाइस, चेक कर लेना. एस ए कुछ भी है, बट लेकिन ए, कैन यू सी दैट एस सी, मतलब दिस एस सी व्हेन यू सब्स्टिट्यूट हियर, दैट मींस ए पॉसिबल है, नहीं है. एस डिराइव्स एस, आएगा नहीं आएगा? यस. एंड यहां भी है इनडायरेक्टली, यहां नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो है लेफ्ट रिकर्शन, है ना. सारे चेक करना जरूरत नहीं है. एंड इसमें भी चेक कर लो, एस है, यहां पर एस है, ए टू बी, बी टू ए नहीं है, एस नहीं आ रहा है. बी टू ए, एस नहीं आ रहा है, तो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है. ए टू बी, बी टू ए, इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है. बी टू बी है यहां पर इनडायरेक्टली, तो इसमें भी लेफ्ट रिकर्शन है. बिकॉज इन फ्यूचर आपको मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस आने के लिए चांस है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लेफ्ट रिकर्शन. ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनने वाला है गाइस. हर प्रोडक्शन में ये चेक करना पड़ेगा आपको, पता नहीं किस नॉन टर्मिनल क्या रिकर्शन प्रोड्यूस करेगा, आपको लेफ्ट रिकर्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट. सो बी हैज नो लेफ्ट रिकर्शन, राइट. नाउ गाइस 2016. नो क्वेश्चन तो बहुत इजी वाले हैं, बट लेंथी क्वेश्चन. इसमें कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी वाले हैं, कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है. आपको स्ट्रिंग दिया, दिस इज द स्ट्रिंग, विच ग्रामर जनरेट्स, दैट्स ऑल. पर कहां नहीं दिखा रहा है, सी प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट दिया और ग्रामर दिया, दिस ग्रामर इज जनरेटिंग सी स्टेटमेंट. वो तो स्ट्रिंग है, वो दोनों सीएफजीस है. आपको इतना नजर रखना है, दिस स्ट्रिंग कैन आई जनरेट, दैट्स ऑल. पूरा पढ़ने के बाद इतना समझ में आना चाहिए, कैन यू जनरेट दैट. इज इट क्लियर? या एक टर्मिनल भी बताया, इंट सेमीकोलन आईडी एंड 3 हो गया, 4 5 6 टर्मिनल्स दिया गाइस, 6 टर्मिनल्स. ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन डी इज द स्टार्ट सिंबल. तो स्टार्ट कर लेते जीवन. कैन यू डिराइव जीवन दैट इंट ए ऑफ 10 ऑफ 3, राइट. तो लेट्स ट्राई डी. कैसे ट्राई करूं? यहां से डी इंट एल. आपका फोकस कहां होना चाहिए? आपका स्ट्रिंग के ऊपर. ओके, इंट आ गया. आइदर यू कैन यूज एलएमडी, आरएमडी और पार्स, इट इज योर चॉइस. आई एम यूजिंग एलएमडी, रिमेंबर आई एम यूजिंग एलएमडी. इंट एल सब्स्टिट्यूट करो गाइस. एल किससे सब्स्टिट्यूट करो? एक ही प्रोडक्शन है ना इसमें, देखो जीवन में. ओके, एक ही प्रोडक्शन, तो उसी को करना पड़ेगा. आपके पास ऑप्शन है क्या दूसरा? चेक कर लो गाइस. डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? नो, तो करना ही पड़ेगा आपको. तो सिर्फ इंट हुआ, रिमेनिंग सारे बाकी है. तो आईडी ओपन पैरेंथेसिस ई सेमीकोलन. अब ध्यान दे दो क्या क्या जनरेट हुआ. इंट भी हुआ, ए भी हुआ. ए मतलब आईडी गाइस, ए मतलब आईडी. तो इंट हुआ, ए भी हुआ, और ओपन पैरेंथ दैट स्क्वायर ओपन स्लाइस दैट इंडेक्स सिंबल गाइस. So square bracket, open square bracket, you have it. So that is also happened. And E, now you have to derive
नाउ यू हैव टू फोकस ऑन ई. सेमीकोलन भी हो गया आपको, अगर चेक किया ना सेमीकोलन भी दिख रहा है आपको, ये भी है आपका फोकस रिमेनिंग. हाउ टू गेट 10, हाउ टू गेट द क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन एंड 3 एंड क्लोज ब्रैकेट. तो ई से ट्राई कर लो गाइस, ई से. तो ई में हम प्रोड्यूस करेंगे, कुछ प्रोड्यूस करेंगे. ई में एक ही प्रोडक्शन है, ए सब्स्टिट्यूट करो. ओ दो है गाइस, अब चेक करना पड़ेगा. सेकंड वाले चूज करो, फर्स्ट वाले, सेकंड वाले गाइस. क्यों चेक कर लेते हैं. इंट id open and e मतलब I'm just substituting. e मतलब num and then closed open e semicolon. क्यों e से ये पहले बन गया, ये भी हो गया, ओपन ब्रैकेट 10 भी हो गया, क्लोज ब्रैकेट. num मतलब 10 इनडायरेक्टली. नाउ सिर्फ आपका फोकस ओपन ब्रैकेट भी हो गया, 3 एंड क्लोज ब्रैकेट, इससे बन जाएगा 3 एंड क्लोज ब्रैकेट. तो फाइनल में यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहां पर हो गया, यहां पर हो गया, राइट. अभी लास्ट में यहां पर होने वाला है शायद लास्ट में इंट id num, उसमें e num एंड क्लोज लगाएंगे, क्यों यहां पर num एंड क्लोज लगाएंगे. बस आ गया ना आपका, यही तो मैच हो रहा है. इंट a एंड 10 ऑफ 3 सेमीकोलन, मतलब g1 derives a string, G1 derives a string. आपको ए चेक करना है G2. Shivang, you have a very good doubt, guys. If you are my student in previous offline coaching institutes, definitely you could have understood. I used to speak continuously 10 hours and hardly I used to take 5 or 10 minutes break in my regular classes. So that is the reason I may teach even 4 hours. Tomorrow you will see me in TOC. I am going to take 8 hours continuously. But again, I will give you break by giving certain problems. I can speak, but definitely there will be an effect tomorrow. Remember that. But I need to balance that. G2. And G2, I'm going to start with D, int L semicolon. अब देखो int भी है and semicolon भी है, focus on remaining portion. L, can I do L with that? Yes, you have to try. L तो एक ही ऑप्शन है, तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, कुछ और नहीं है आपको. L तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा आपको. सब्स्टिट्यूट करो, that is id e semicolon. अब क्या क्या आया नजर रखना है, क्या क्या आया क्या क्या नहीं आया. तो इंट भी हो गया, सेमीकोलन तो पहले हो गया, अभी आईडी भी आया, तो ए भी आएगा इस. तो आप ई पर फोकस रखना है. कैन आई जनरेट ई से द रिमेनिंग दैट ब्रैकेट्स दैट स्लाइसेस टू इंडेक्स 10 एंड 3 इंडेक्स गाइस. कैन आई डू दैट? लेट्स ट्राई. तो ई का दो ऑप्शन है, एक रिकर्शन वाली लेना पड़ेगा. क्यों? मुझे 2 इंडेक्स चाहिए, एक इंडेक्स चाहिए तो लास्ट वाली. चलो तो पहली प्रोडक्शन लूंगा मैं, तो ई एंड नम. तो इससे क्या होगा, अभी नया ये भी आया, क्या आया, ये क्लोज ब्रैकेट 3 आया और ये भी आया, सिर्फ 10 के लिए बचा इंडेक्स. और वो भी ट्राई कर लेते. ई सब्स्टिट्यूट विद द लास्ट प्रोडक्शन दैट विल टेल यू योर रिक्वायरमेंट. इंट आईडी दैट इज नम फॉर द फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स तो ऑलरेडी डिराइव किया, तो दैट इज व्हाट योर स्ट्रिंग. इतना स्लो क्यों कर रहा हूं? क्यों? दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दे कैन अंडरस्टैंड इजीली. दिस इज व्हाट इज मैचिंग. सो बोथ कैन डिराइव. इस ग्रामर में कुछ नहीं है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया, स्ट्रिंग दिया, यू हैव टू जनरेट द स्ट्रिंग, दैट्स ऑल. लेकिन दिखने के लिए ये कुछ अलग दिख रहा है ग्रामर. ऑलराइट, दैट्स गुड. प्रिय बताओ, यू कैन डू विद द पार्स फ्री, यू कैन राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. आपको इतना पता होना चाहिए, आई कैन डिराइव, दैट्स ऑल. You can use a pass, you can use LMD, you can use RMD, you can use your knowledge, right? Once you are having the perfection, आपको कुछ भी जरूरत नहीं, उसको देखे ही समझ में आना चाहिए, उसको देखे ही समझ में आना चाहिए, right? Alright. Alright. तो आंसर इज G1 and G2.
ओके 2016 ये खतरनाक क्वेश्चन है गाइस, खतरनाक क्वेश्चन है भी, कभी कभी ग्रामर से करना पड़ेगा. यू हैव अ टेबल, यू डोंट नो विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिमेंबर दैट सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके अंदर कंपाइलर ऐसे बिल्ड किया. एंड देखो प्लस इज ऑपरेटर which has I precedence and star is low and minus is medium. Is it clear? 3 दिया, इसकी तीनों में रिलेशन कुछ नहीं है, सिर्फ I low medium, कोई भी इक्वल नहीं है. बट इन प्लस मतलब लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव एंड माइनस मतलब राइट टू लेफ्ट एंड मल्टीप्लीकेशन मतलब लेफ्ट टू राइट. सारे बाइनरी क्यों दिया? 2 ऑपरेंड जरूरत है, 2 ऑपरेंड. तो शुरू कर लेते. सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन है? ये वाली, इसको सबसे पहले करना पड़ेगा आपको. कर लेते जल्दी जल्दी. 2 minus 5 plus 1 minus 7 star 3. How do you do that? How do you do that? प्लस सबसे पहले ही करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं देखना आपको. प्लस सबसे पहले ही कर लो. 5 plus 1 what is it guys? अगर 2 प्लस है फॉलो लेफ्ट राइट, एक ही प्लस है ना, मजा आया तो डायरेक्टली कर लेना. 2 minus 6. आप ये नहीं बोलना सर ऐसे कैसे किया, तो ऐसे ही करना पड़ेगा. क्यों? यू आर नॉट फॉलोइंग एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यू आर फॉलोइंग द क्वेश्चन. लोग बोलते सर मल्टीप्लिकेशन इज हाईएस्ट प्रेसिडेंस, प्लस यू कर रहा है, राइट? तो इट्स नॉट अ सी लैंग्वेज गाइस, इट इज अ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, सिर्फ क्वेश्चन को पता. ऑलराइट, नेक्स्ट हाईएस्ट इज द माइनस. देख लेना, माइनस को ही करना है नेक्स्ट, बिकॉज टेबल में बता है ऐसे ही जा सकता आप. एंड माइनस में 2 है, मैं 2 है तो ये राइट एसोसिएटिव वाली है, मतलब राइट माइनस को पहले लेना है, इसको पहले करना है, इसके बाद इसको करना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट, इसको बोलते हैं राइट लेफ्ट. तो अब करो 2 minus 6 minus 7 एंड स्टार 3. बताओ 6 minus 7 minus 1, 2 minus of minus 1, 2 plus 1 3 into 3. एक ही मल्टीप्लीकेशन है, ब्लाइंडली करो, दैट इज द 9. आंसर इज 9. क्लियर? या. Star is having lowest precedence. It is a numerical type question, so you have no other option guys. And this is a question where you don't have options. This is a numerical answer type. Have you seen guys? Static single assignment, it was asked 2 times so far. It means it is definitely has a more priority in the exam, no doubt. No doubt. 3 address code and static single assignment has a more precedence. Now question is minimum number of total variables. Guys, इसको कैसे करोगे? You need to write an expression, you need to write the best 3 address code, you need to write SSA code. Are you clear? Are you clear? पहले एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, बट एक्सप्रेशन में इतना देखना, कॉमन सब एक्सप्रेशन से क्या 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 चेक करना पड़ेगा. आई एम टेलिंग यू गाइस व्हाई वी कन्वर्ट 3 एड्रेस कोड में एक्सप्रेशन. व्हाई वी कन्वर्ट, द फर्स्ट थिंग इज अगेन व्हाई वी कन्वर्ट टू 3 एड्रेस कोड. द रीजन इज in expression you can look at easily, do you have any common sub expression? We can easily check, what are the things? Common sub expressions. क्यों कॉमन सब एक्सप्रेशन होगा ना, एक बार करेंगे दूसरी बार उसी को यूज करेंगे. एंड वी कैन डू reordering of the computations. Third guys, reusing of variables. ये बहुत कुछ कर सकता. एंड आप क्या कर सकते हैं? algebraic simplifications. अगर कोई कैंसिलेशन हो रहा है उसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये सारे सिर्फ एक्सप्रेशन में दिख जाएंगे आपको. Are you clear? This kind of things can be done easily on the expression rather than just 3 address code. इसको analysis अच्छा से होंगे. All right, everybody clear? So can I write
डोंट माइंड इफ आई राइट एक्सप्रेशन, बाद में समझ में आएगा, लिखना जरूरत ही नहीं है, लिखना जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसमें कॉमन सब एक्सप्रेशन भी नहीं होंगे, रीऑर्डर की जरूरत नहीं भी होंगे, आपको रीयूजिंग वेरिएबल्स हम करेंगे, अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन की भी नहीं होंगे। आर यू क्लियर? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, right? We need the best 3 address code. That is the reason we do all these things. But a given code is already best. How do you know that? Only when you write expression you will know that is the best. Are you clear this point? Okay, let me write this. Right guys. Okay, fine. Just I'm doing erasing. Okay, now I'm writing an expression, but don't mind, that is going to waste your time and my time too. And that's also practice to write an expression. Write an expression. Y रिवर्स में स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो गाइस, याद रख लेना, रिवर्स जा रहा है, रिवर्स। Y इज इक्वल x स्टार y एंड x तो कहां से आ रहा है? दिस इज योर x and y, this is your y. Remember, you should know how to substitute them properly because यहाँ पे बहुत सारे x and y है guys, बहुत सारे x and y है, तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए which x y you are looking at. So x is y plus w and y is t minus z. Parenthesis लगा लेना तुरंत. Remember, and now you have to focus on each one separately, each one separately. ये y है, इसके अंदर y है, what is that y guys? This y is nothing but x star v, इसमें करना पड़ेगा, तो we will do that one at a time, x star v plus w, ये तो सीधा बाहर से आ रहा है, आपको कुछ टच नहीं करना, w लिख लेना, स्टार t है, t ये भी बाहर से आ रहा है, कुछ टच नहीं करना आपको, t है, माइनस z अंदर कंप्यूट किया क्या? नहीं, ये भी बाहर से आ रहा है, तो टेंशन नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो गाइस। नाउ एक तो मिस हो रहा है, यहां पर x भी है, यहां पर x भी है, दिस x इज नथिंग बट u माइनस टी, ये x एंड इसको u माइनस टी स्टार v प्लस w स्टार और t माइनस z, बस ये फाइनल एक्सप्रेशन है गाइस। ये पूरा करने के बाद यू हैव टू क्लियरली अंडरस्टूड, ओके वी आर डूइंग दिस एक्सप्रेशन ओनली। इस एक्सप्रेशन में कोई कॉमन सब एक्सप्रेशन है क्या? ऐसे u माइनस टी दो बार है क्या? नहीं। t माइनस z दो बार है क्या? नहीं। तो आपको चेक करना है कोई एक्सप्रेशन दो बार कंप्यूट हो रहा है क्या? नहीं। क्लियर है पॉइंट? और इसमें कुछ कैंसिल कर सकते क्या? ऐसे प्लस टी, x प्लस टी है और यहां माइनस टी प्लस एंड z माइनस टी है, माइनस टी प्लस टी कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ यहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? प्लस w तो है, माइनस w नहीं है, माइनस टी तो है भले प्लस टी तो नहीं है, तो माइनस z है भले प्लस z तो नहीं है, तो माइनस के ऊपर ध्यान लगा लो, माइनस आया तो प्लस भी आएगा, तो वो कैंसिल कर सकता कभी कभी। राइट, फोकस इज क्लियर एवरीबॉडी? माइनस को फोकस रखोगे क्यों प्लस आके उसको सिंप्लीफाई करेगा। फोकस ऑन माइनस ओनली, फोकस ऑन माइनस ओनली। राइट, नाउ अब चलते इसको बेस्ट 3 एड्रेस कोड बना लेते हैं। बेस्ट 3 एड्रेस कोड रीऑर्डरिंग भी, कभी कभी टी माइनस जेड पहले कंप्यूट किया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होगा, कभी कभी यू माइनस टी होगा, ये प्रॉब्लम होता है रीऑर्डरिंग। मतलब गाइस ये देख लो, ये कुछ और है, स्टार कुछ और है। विच वन यू डू फर्स्ट? विच वन यू डू फर्स्ट? This expression 1, expression 2, we don't know. Sometimes expression 1 when you compute, you might get less variables. When you do expression 2 first, you might get less variables. You need to focus on left or right. Sweta wrong, ये नहीं बता सकते हम. They are free to choose. Left or right is your decision. You can choose. You can choose left or right. But what do you choose? That depends on number of variables, that depends on which one will produce minimum number of variables, which one can produce
मिनिमम वेरिएबल्स, वो करने के बाद भी समझ में आता। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? कभी कभी करने के बाद भी समझ में आता, कभी कभी एक्सप्रेशन 1 करके देखा, कभी कभी एक्सप्रेशन 2 भी देखना पड़ेगा तुरंत। अब इसको देखो, ये कैसे कर रहा हूं मैं, देखो एक बार। सपोज इफ आई एम डूइंग टी माइनस जेड, यहां पर टी बाद में यूज हो रहा है ना, टी यूज नहीं कर सकते, जेड आप तो यूज कर सकते, ये जेड का काम खत्म है, बट जेड फ्यूचर में यूज हो रहा है, मतलब टी माइनस जेड इज नॉट गुड स्ट्रेटेजी गाइस। टी माइनस जेड अभी बता रहा हूं, देखो क्यों which one is the best choice I'm trying to tell you guys. Look at my concept, look at my concept, look at my concept, look at my concept, look at my concept. You will understand what I'm trying to speak. Now tell me, will you do this first or will you do u minus t first? Which is the best choice for you now? T minus z is not the best choice. Why? T minus z के बाद t फ्यूचर में आ रहा है, z भी फ्यूचर में आ रहा है, तो टी जेड को रीयूज नहीं कर सकते, रीराइट नहीं कर सकते। अब बेस्ट चॉइस इज यू माइनस टी, बिकॉज यू माइनस टी के बाद यू फ्री हो रहा है, मतलब यू आर सेविंग द वेरिएबल। यू आर, अगर टी माइनस जेड पहले किया ना, टी माइनस जेड इस वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकता, यू नीड टू क्रिएट ए न्यू वेरिएबल। आर यू क्लियर? तो इसलिए विच वन यू डू फर्स्ट, यू नीड टू फोकस ऑन टी माइनस जेड किया, ओ आई हैव टू क्रिएट ए न्यू वेरिएबल, बट यू माइनस टी किया, oh I can reuse a u because u is the free after this, u is the free after this. Yes or no? Is it clear? And understand what I am trying to speak, right? U minus t, if we compute this, what happens here? What happens here? U will be free, t is not free. U minus t you can store in u, but if you compute t minus z, can I store t minus z in t? No, because t is there in the future, z I can't use. तो इसके लिए so which one you are doing first is very important, but यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, क्यों? इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है गाइस, आप t minus z करो चलेगा, क्यों? इसके बाद t तो है बट z फ्री है, तो you can use the z, I am reusing the z. Clear this point? Now u minus t, इसके बाद u फ्री है, t भी फ्री है, क्यों? t ऑलरेडी कंप्यूटर है, तो it is your choice, u or t is your choice now, u minus t is your choice, u or t, but लेकिन इसके बाद t is a free because t no anybody can use now, है ना? Next u multiply with v, u multiply with v. अब इसके बाद v is the free, v is the free and u is the free and t was already free and this many are free right now. You can choose anybody, v, u or t, because I'm already using u, I'm trying to do that. Okay, u and u plus w. Next u plus w. अब इसके बाद u भी फ्री हो गया, v भी फ्री हो गया, t भी, w, and इस चार में कोई भी यूज कर लो चलेगा, तो मैं u को भी यूज कर रहा हूं, u को ही यूज कर रहा हूं गाइस हमेशा, एंड u स्टार z इसके बाद किसी में भी स्टोर कर लो, u, v, t सब कुछ फ्री है, बिकॉज दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द बेस्ट 3 एड्रेस कोड। नाउ सारे हटा रहा हूं गाइस, दैट इज द बेस्ट 3 एड्रेस कोड। नाउ आपको आंसर आया होगा, कितना वेरिएबल से यहां पर कितना वेरिएबल से, पहले ये देखो u है और v है और t है, z है और w भी है, और कुछ है देखो, कम ऑन गाइस, और कुछ है देखो, नहीं है, 5 वेरिएबल्स ऑलरेडी है। नाउ स्टैटिक सिंगल एलिमेंट कितना स्टेटमेंट्स है? 5 वेरिएबल्स इन द बेस्ट 3 एड्रेस कोड, इन बेस्ट 3 एड्रेस कोड एंड प्लस 5 स्टेटमेंट्स, तो टोटल कितने वेरिएबल्स आएगा स्टैटिक सिंगल में? 10 वेरिएबल्स आएगा, पक्का आएगा। ये शॉर्टकट है, पहले इसको प्रूव कर रहा हूं, शॉर्टकट तो I will not like basically because I always look at understanding. शॉर्टकट तो आप पढ़ लेना, एग्जाम में आप कर लेना गाइस। तो आप क्या करोगे? रीनेमिंग गाइस, क्या? t माइनस z में दोबारा नहीं लिख सकते ना, तो आप z1 में लिखोगे, जब z1 में लिखोगे रीनेम करना है, z1 यहां पर है और यहां पर है, तो यहां पर दोबारा z1 आएगा लास्ट स्टेटमेंट में, इसको याद रखना है आपको। डिपेंडेंसी बोलते हैं उसको, डिपेंडेंसी,
और नेक्स्ट u माइनस टी है, तो u में नहीं लिख सकते आप, तो उसको भी रीनेम रखेंगे u1, तो u1 है तो इसका भी u1 बनाएंगे, दैट्स ऑल एंड यहां भी u1 लिखे ही जाएंगे हम, u1 एंड मल्टीप्लाई विद v, एंड u में नहीं लिख सकते बिकॉज u ऑलरेडी हैज अ मीनिंग, तो u2, u1 भी नहीं लिखेंगे, u1 भी काम खत्म, यूज कर लिया हम, u2 ये रिलेशन इसकी है तो 2 बनाएंगे हम, तो u2 प्लस w इज इक्वल, u में लिख रहा है तो u3 लिखो, क्यों यू कांट यूज द सेम u अगेन, तो u3 एंड u3 बनाएंगे 3, तो फाइनल आंसर इज u3 मल्टीप्लाई विद z1, u4 लिखेंगे लास्ट वन बिकॉज यू कांट रीयूज द सेम अगेन, तो ये एक्स्ट्रा 5 वेरिएबल्स आया, तो 5 प्लस 5 10, तो एक्स्ट्रा z1 u1 u2 u3 u4, तो 5 प्लस 5 टोटल 10. Okay, 10 is the answer, guys. Yeah, this was already GATE question, guys. If you go and look at the solutions of the GATE books some people have written, they are writing anything they like it. They are saying 5, कोई बता रहा है 7, कुछ भी बोल रहा है, तो please try to understand what is SSA code. This is the best technique as per my knowledge. Okay, 2016 another one, and they have given SDT, and this is your SDT translation scheme, and you need to use the bottom up parser. Guys, this is already S attributed grammar technique, देखो S attributed and also L attributed, आप कुछ भी follow करो, bottom up parser, bottom up parsing, or you can use all the translations from the left to right in the constructed tree. Guys, remember कोई भी follow करो चलेगा, तो इनपुट के लिए कंस्ट्रक्ट करो, पहले इनपुट के लिए गाइस एस ए, एक तो है प्रिंट 1, ए बोल रहा है प्रिंट 1 लिख लेना, एंड देन कैपिटल ए यू रिक्वायर एस बी, एस एंड बी इसकी है प्रिंट 3, एंड लास्ट वन इज एस ए एंड इसकी एक्शन भी है, दैट इज अ प्रिंट 1, प्रिंट 2. तो आपको ये चेक करना है, रिवर्स ऑफ आरएमडी तो बहुत टाइम लेगा एग्जाम में, तो आपको हमेशा एल एट्रीब्यूटेड कॉन्सेप्ट फॉलो करना, रिवर्स ऑफ आरएमडी टेक्स टाइम, whenever if it is S attributed grammar you can always follow L attributed. L attributed बहुत easy है guys. What is L attributed? Just scan from left to right, जो translations है ना इसको नीचे पहुंचा दो, same order, order बदलना नहीं, तो आउटपुट 2 3 1 आएगा गाइस, तो डायरेक्टली चूज कर सकते हैं आप 2 3 1, बहुत इजी टेक्निक है, ऑल द ट्रांसलेशन जस्ट डू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आंसर इज ओवर. ऑल द एट्रीब्यूटेड ग्रामर्स यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट, लेकिन ऑर्डर सही होना चाहिए, ट्रांसलेशंस ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एवोल्यूशन तो अलग कॉन्सेप्ट है, आउटपुट बहुत इजी वाली गाइस, ये आउटपुट वाली है ना, इफ यू हैव एट्रीब्यूट्स प्लीज डोंट फॉलो दिस टेक्निक, प्लीज डोंट फॉलो, यू नीड टू डू टॉप डाउन एंड बॉटम अप, दोनों कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करेंगे, ट्रांसलेशंस जस्ट टेक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आर यू क्लियर, जस्ट टेक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, all the leaves everybody, but don't apply this technique when you have attributes में ऊपर भी जाना पड़ेगा, तो that will not work for attributed grammars, this technique will not work. Fine, this is easy question now guys. Okay, 2015 say can we do our next session next Saturday Sunday, how would be it guys, tell me quick, we are already 2 hours we are running on this session, and are you ready for the next Saturday? I'll continue this session. Okay, so we will meet from date 2015 to 5 to 6 years more, but with a clear knowledge each question why it is true, and sometimes GATE also may not have the right options, so we need to look at, right, we should not blindly follow the options, remember that. Fine. Okay, for that I'm just winding up the session, but I'm always there to help you guys, and don't assume that I will skip them at any cost, I will complete, remember. And remember, tomorrow I have 8 a.m. Unacademy free class, algorithm free class, remember, and 9 a.m.
I'll come to YouTube again. What is the best career option? Please come and join tomorrow at 9 a.m. and discuss with me if you have any doubts. Tomorrow we'll come back again. Today also I have taken 9 a.m. session. Are you preparing in right direction? How do you know about it? Today 9 a.m. if anybody not watched the video, please go and watch. Today 9 a.m. special session was happened, and this is tomorrow session. Yeah. And 11 a.m. to 7 p.m. Tomorrow, this is one where everybody can get a benefit. 8 hours that I'm going to teach continuously, but it's going to be scary, it's going to be fun, and it's going to be something like that you have never seen before. And please attend that session, 8 hours, continuous session, but I'll give few minutes break to have such sessions. Okay. And 8 p.m. we will see that the last time 100 important questions on C programming part 1, 50 questions were over. Then 50 questions I'm going to do on tomorrow. So please attend the tomorrow 8 p.m. session. I'll be connecting again. So please don't forget my referral code DEVALIVE. Deva is my name and live because we attend the live classes. You can remember DEVALIVE very easily. So use this code and refer to your friends if anybody want to join Unacademy, either free classes or plus. And this is my profile to connect with me, unacademy.com/DevaGateCSE. And this is our Telegram channel where every day we will share our links and material and you can access them. Please subscribe to the Telegram channel. And we have so many the YouTube channels. Please share with your friends, which are all absolutely free. And also we have Unacademy app and you can download and you can watch through them using mobile. Remember. And thank you so much for joining this session, and take care, good night, and see you. And don't forget to like and share if you enjoy this session, and subscribe this channel if you have not done. Thank you so much. Don't forget to like before leaving this session. Bye bye. See you.